ऑलराउंडर हैं, बड़ी हिट्स भी लगा सकते हैं और इनिंग्स से किसी भी हिस्से में आके बॉल कर सकते हैं काशिफ। आगे रहना थोड़ा और बिल्कुल ऐसा ही है, एक्सपीरियंस्ड है और आगे रहना थोड़ा। पाकिस्तान की टेस्ट स्क्वाड के कंटेंशन में भी रहा है काफी अर्सा रहे। और सिंध का ये एक और टैलेंट है जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट में भी काफी डिस्कस हुआ। यहाँ काफी तजुर्बा रखते हैं काशिफ भट्टी और उनके कैप्टन को इनसे उम्मीदें होंगी कि यहाँ पे एक ब्रेक थ्रू दिलाएं। फैमिलीज यहाँ इस ग्राउंड में जमा होती हुई। इस दफा भारी किनारा लिया, बड़ा शिट लगाना चाह रहे थे यहाँ पे अजान तारिक, लेकिन बॉल थोड़ी फाइन गई है। अली खोकर मौजूद शो थर्ड मैन की तरफ और इसी तरह एक और 2 रन लेने में कामयाब हुए हैं। काशिफ यहाँ पर थोड़े से मायूस नजर आए क्योंकि अच्छा गेंद था लेकिन एज हुआ और ये बॉल जो है वो आउटफील्ड भी यहाँ पर थोड़ी सी स्लो है जिसकी वजह से और यहाँ पर बड़ी अपील, सीधा बॉल था और काशिफ भट्टी को इस बार कामयाबी हासिल हुई। अंपायर ने फौरन फिजा में उंगली बुलंद की। हम कहने ही लगे थे कि अजान तारिक को थोड़ा सा मोहतात रहना होगा काशिफ भट्टी के खिलाफ, क्योंकि बच स्लोअर थ्रू दी एयर बॉल छोड़ते हैं और इतना बहुत लेट आता है इनका बॉल। यहाँ भी देखें, अब बड़े जल्दी स्वीप शॉट मारने चले गए थे, उसके बाद बॉल जाके इनकी बैक लेग पे लगी और एक आसान सा फैसला खालिद महमूद की तरफ से, क्योंकि बिल्कुल ही विकेट्स के सामने खड़े थे। लेकिन एक काफी अच्छा आगाज फराहम करके अजान तारिक ने 36 रन बनाए और पवेलियन लौट रहे हैं इसी विकेट के साथ से 61 पे 2 इजी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ देर पहले ही एजी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स ने अपनी दूसरी विकेट का नुकसान उठाया जब ओपनर अजान तारिक, जिन्होंने काफी अच्छा आगाज फराहम किया था, 36 रन बना के पवेलियन लौटे और उमर अकमल अपनी टीम से डिस्कस करते हुए कि इसी ब्रेक थ्रू की जरूरत थी और यहाँ पे इसी मोमेंटम को अब कंटिन्यू करना है, प्रेशर मजीद बढ़ाना है, डॉट बॉल्स खिलानी है ताकि दोनों ही बैटर्स पे प्रेशर लगे और यहाँ पे विकेट्स हासिल करें, क्योंकि एक अच्छा आगाज मिला है एजी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को। मोहम्मद उमैर नए आने वाले बैटर, चौथे नंबर पे बैटिंग करने के लिए आए हैं एजी रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स के लिए। ये अजान तारिक आउट होने का मंजर बॉल पड़ के थोड़ा सा स्ट्रेट हुआ और अजान तारिक जो कि स्वीप करना चाह रहे थे, काफी नीचे थे और उनको अंदाजा था कि काफी करीबी मामला हो सकता है। और यहाँ पर नए बल्लेबाज के आते ही फौरन से स्लिप ले ली और स्लिप पे कप्तान उमर अकमल खुद गए हैं। काशिफ भट्टी की के सजेशन पर फौरन स्लिप ली गई यहाँ पर उमैर के लिए। अगर हम दोनों स्पिनर्स को कंपेयर करें, शाजिब भट्टी और काशिफ भट्टी को, तो काशिफ भट्टी ऑब्वियसली इनके पास तजुर्बा ज्यादा है और काफी मैचेस खेल चुके हैं, तो उनको अंदाजा है कि कैसी कंडीशंस हैं और किस पेस पे, किस चैनल पे बॉल गिरानी है। शाजिब भट्टी थोड़ा सा तेज करा रहे थे, स्पेशली क्योंकि उनको एक चौका और छक्का पहले ही ओवर में लग गया था, तो थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे थे अजान तारिक के खिलाफ। लेकिन काशिफ ने अपना भरपूर तजुर्बा दिखाया और दलेराना यहाँ पे बॉलिंग का मुजाहरा किया और इसीलिए एक बहुत अहम कामयाबी भी समेटी। और यहाँ पर अपना ओवर मुकम्मल किया, एक कामयाब ओवर एजी रियल्स, 61 for 2 आफ्टर 9 ओवर्स। और यहाँ पर अब सुलेमान को फ्रंट से लीड करना पड़ेगा क्योंकि वो 16 गेंदें खेल चुके हैं अब तक। एक बड़ा शानदार चौका भी लगाया यहाँ पर उन्होंने, पर यकीनी तौर पर प्रेशर भी होगा उन पर।
इस दफा एक और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ड्राइव खेलने में कामयाब हुए हैं सुलेमान सलीम। काफी लंबी चेज डीप कवर के फील्डर के लिए, लेकिन पहुंच नहीं पाएंगे। अली खोकर के 2 गेंदों पे 2 चौके लगाने में कामयाब हुए हैं अब सुलेमान सलीम। पिछले ओवर की आखिरी गेंद पर, इस ओवर की पहली गेंद पे भी वही शॉट। इस दफा लेंथ थोड़ी फुल थी और उन्होंने पहले ही जहन बना लिया था कि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना है, और भरपूर टाइमिंग का यहाँ मुजाहरा किया सुलेमान सलीम ने। इस शॉट की खूबी ही ये थी कि इसमें बहुत ही खूबसूरत टाइमिंग का इस्तेमाल किया था सुलेमान ने, और ये बॉल जो है वो किसी के कंट्रोल में नहीं आई और इट रेज्ड अवे टू द बाउंड्री। नेक्स्ट पे खेले हैं, सीधा मिड विकेट के हाथ में गई बॉल, लेकिन बासानी एक और रन यहाँ पे लेने में कामयाब हुए हैं सुलेमान। थोड़ा सा स्लो थे शुरू में, लेकिन अगर अब हम इनकी स्ट्राइक रेट की बात करें तो हाई 90s में है, और कोशिश करेंगे कि अब यहाँ से थोड़ा सा मोमेंटम गेन करें और प्रेशर नहीं बढ़ने दें उमैर पे, क्योंकि अभी नए आए हैं, थोड़ा सा टाइम लेंगे जरूर वो सेटल होने में। और अच्छी स्ट्रेटेजी ये है कि आपने एक बाउंड्री लगा ली, उसके बाद आपने ज्यादा पैनिक करने की कोशिश नहीं की, आपने एक सिंगल लिया, दूसरे को स्ट्राइक दी, तो इसी तरीके से बाउंड्री और स्ट्राइक रोटेशन होती रही तो यकीनी तौर पे प्रेशर होगा ऑपोजिशन पर। यहाँ काफी आसान हो जाता है जब पहले ही गेंद पे आपको बाउंड्री हासिल हो जाए, तो अगले 5 गेंदों पे 5 सिंगल्स भी आप हासिल करें तो 9 रन आ जाते हैं आराम से। और दोनों ही बैटर्स इस बात को बखूबी समझ रहे हैं। और यहाँ पर मिड विकेट के फील्डर भागते हुए आए थे बॉल को कलेक्ट करने, बट यहाँ पर अच्छा कंटेन करते हुए नजर आ रहे हैं दोनों बल्लेबाज। अगर इसी तरीके से ये लोग खेलते रहे तो एज एरियल्स को एक अच्छा टोटल बनाने में बहुत मदद फराहम होगी। स्ट्रेट ड्राइव किया है, लेकिन मिड ऑफ पे फील्डर थे मौजूद, उमर अकमल कप्तान खुद, कि गिरते पड़ते बॉल रोकने में कामयाब हुए। बिल्कुल थोड़ा सा फंबल कर गए थे उमर यहाँ पर, लेकिन बॉल को उन्होंने अपने हाथ से निकलने नहीं दिया, ये खूबी है उमर अकमल की। और फील्ड में थोड़ा सा आपको इस वक्त एक्टिव नजर आ रहे हैं क्योंकि कप्तान है, और यहाँ पर एक विकेट तो उन्हें अभी रिसेंटली मिली है, और कोशिश यही है कि मजीद विकेट मिले। ये आप देख सकते हैं कि अच्छा एफर्ट ही कहेंगे इसको, क्योंकि वो लड़खड़ाए बट बॉल को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया। सुलेमान सलीम एक दफा फिर गैप में खेल के तेजी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। यहाँ काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं उमर अकमल, उनको अंदाजा है कि कितनी अहमियत का हामिल है आज का मैच। काफी उम्मीदें हैं उनके फैंस से, काफी उम्मीदें हैं उनको अपने घर वालों से, उनके घर वालों को भी काफी उम्मीदें होंगी कि एक अच्छी परफॉर्मेंस यहाँ दें और अपनी टीम को सेमीफाइनल्स की तक रसवाई हासिल करवाएं। पर्सनली भी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस वक्त नेशनल टीम के लिए बड़ी जद्दोजहद कर रहे हैं वो दोबारा कमबैक के लिए। और यहाँ पर बड़ा शॉट, लेकिन सीधा उमर अकमल के हाथों में। अभी हम यही बात कर रहे थे कि उमर अकमल हर जगह फील्ड में नजर आ रहे हैं, और एक आसान कैच के साथ उमर अकमल और इशाल एसोसिएट्स के लिए साय ऑफ रिलीफ। बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे इस तरह के शॉट खेलने की, क्योंकि आपको 7-8 रन वैसे ही आसानी से मिल रहे थे। बड़ी हिट लगाना गए थे लेकिन सिर्फ स्लाइस कर बैठे, और उमर अकमल जो कि मिड ऑफ में मौजूद थे इस बार कोई गलती नहीं की, आंखों के सामने कैच लेने में कामयाब हुए। और इसी तरह इजी रियल स्टेट एंड बिल्डर्स ने तीसरी विकेट का नुकसान उठाया। सिर्फ एक ही रन बना सके उमैर आज, और पवेलियन लौटे 68 पे 3 10 ओवर्स के इख्तिताम पे। $68 for 3 after 10 overs. We've just witnessed Umair getting out in the last ball of the previous over, and now he has been replaced by Ali Imran, who has been really prolific for AZ Real Estate and Builders, especially if you talk about this tournament. That's how Umair lost his wicket. It was a nothing shot in the end, and an easy catch taken by Umar Akmal, the captain.
I've been joined by Danish Anis alongside me in the commentary box. Welcome back, Danish. Rightly said, Zishan. Ali Imran has been a rock for his team. Won the last match for his team single-handedly. Stayed till the end. Played a responsible innings. Dead ball. Suleiman Salim clearly was not ready. I think there was some movement on the side screen. He doesn't care what's happening. He's just fixing the side screen. Just doing his job there. Suleiman Salim has looked decent. Played some very nice strokes through the cover. Yeah, initially he was struggling a little bit, especially against the pace of Arshad Iqbal, but he looked pretty settled against the spinner, and we saw him collecting 2 boundaries from Ali Khokar. How good has Kashif Bhatti been, Zishan? Using his experience, Tariq was going guns blazing. He has taken care of one side of the crease. That's what experience does. A chip shot straight down the ground. It's into the gap. That ball has landed on a very rough patch, but it just stopped there after landing. Ball acting like a shot put there. Landed and stayed there. It was well played, that chip shot. Realized the field was up in the circle. Yeah, he knew there was a big gap between extra. Come on, an easy catch again. It's that man, the captain, Omar Akmal, getting some catching practice here tonight so far. It seems like the ball is following him. He just changed his position from mid-off to short mid-wicket. And Suleiman just lofted it back to him. Just couldn't get that ball down there, Suleiman Salim. Once again getting a start, not converting it into a big one. 20 runs for the left-hander tonight. It's 70 for 4. That has been the story till now for quite a few talented batsmen in this tournament already, Zishan. They look impressive, settle down, and end up giving away the wicket. That has been the difference between some of the players. If you try and compare them, for example, Khwaja Nafi settles in and looks to score big. Yeah, as a batter, you need to give value to your own wicket. Because if you're going to stay out there, you are not helping your side, but you are also creating difficulties for the opposition. Suleiman Salim had a good start. He has made 23 deliveries already. That is the most crucial aspect that you mentioned, Zishan. He played 23 valuable deliveries. He took his time to settle down on the crease and then gave away his wicket. A new batter will come in and try and settle down. But one ray of hope for AZ Real Estate and Builders is Ali Imran, who's there on the crease. He would look to play throughout the 20 overs. Once again, Rizwan joining him. Even he has played a pretty decent role for his team till now. Yeah, they got a decent partnership in the previous game as well, both Rizwan and Ali Imran. But Ali Imran definitely has more experience, and he'll be looking at one batter at least to give some solid support to him at the other end. That's how Suleiman Salim lost his wicket. Soft dismissal in the end, Zishan. A very soft one. It was short, it gripped. All he could do was hand it to Omar Akmal. This is going to be a very crucial partnership for AZ Real Estate and Builders. Straight over fielder at first slip, and he paddled it down fine. He's going to collect a couple to get off the mark with Rizwan. That first stroke by Rizwan is testament of the fact that he has played some decent knocks in this tournament already. He's carrying that confidence. Otherwise, you wouldn't go for a sweep shot first up. Yeah, he knows the situation of the game. He knew the fielder at square leg. It was pretty square. And once you hit it fine, you can easily collect few runs. Leading edge. Over Omar Akmal this time. Now, does he need to do that? You've just taken a couple. Take another safe single and bring Ali on strike. Yes, he's just come onto the crease, but just shed the pressure off you. Yeah, playing across the line, that too on your very second delivery of the innings. Especially against Kashif Bhatti, who has been on top of his game in this game so far.
Once again, a very good over. A successful one comes to an end from Kashif after 11. It's 73 for 4. This is how AZ Real Estate and Builders have played so far. Azan Tariq scoring 36 of 26. Suleiman looked good, scored 20 of 23. Ali and Rizwan trying to consolidate here. They have to play all the way through. Yeah, they have 9 overs remaining in their innings. Even if they can bat sensibly for just singles and twos for the next 4, then they can go for the onslaught in the last 5. They've definitely set the platform to reach 140 or 150 from where I see it, considering, as you mentioned, they play sensibly. Yeah, even the captain Ismail Khan was looking at around 150, and he thinks that he has the bowling lineup, he has that arsenal in this bowling lineup to defend the total. Another bowling change. Ali Khokar has now been replaced by another left-handed spinner, Mohammad Waheed. Starts off with a slightly shorter delivery, which has been put away towards deep cover. Both these batsmen should be looking for a single. You're looking at the stump cam here. If you, we'll get back to it. Easy. So Dishan, if you look to buy a stump cam, it costs millions of rupees. But GeoSuper's production team has made it themselves, which is absolutely amazing. It's homemade. Kudos to the guy who made it. So he has done an excellent job. And Mr. Rihan Siddiqui, the mastermind behind it, took the initiative and ended up producing it. Once again, another single taken by Ali Imran down the ground. And this stump cam usually gives you a better idea whenever a bowler bowls a good Yorker or a fuller length delivery. Once again, too short, too wide outside the off stump. That is the way they need to be playing at this stage. Now from where I see it, they already have 5 singles here. And he goes for a big one. Exactly what we were talking about. Ali Imran getting the connection, playing it safely, yet getting a maximum for it. After 12, it's 84 for 4. Yeah, hitting the ball exactly where you'll be having dinner later tonight, Danish. Straight as an arrow over the cameras. That was some hit from Ali Imran. We usually don't see him going after the bowling that early, but he saw the ball in his arc and he has made his intentions very clear so far. Now we understand they might not get a 6 or a 4 every over, but they just got 11 of that one just because they took 5 singles each ball. Kashif Bhatti back into the attack. Will be bowling his third, just giving away 7 for 2 wickets. Yeah, he has been the one who has been making life difficult for AZ Real Estate and Builders. He was the one who broke that partnership when he took that wicket of Azan Tariq. Rizwan, on the other hand, looking at the leg side field. Aja. Sensible, really sensible. One thing that they have made sure that they have kept their run rate over 7 runs an over, which is pretty good. Because even if you go at a runner ball from here on, you can still reach 140, which is a very competitive total on this track. Just checking his stroke towards the end. Got the error from Ali Imran. Kashif Bhatti bowling brilliantly here. They can afford to respect Kashif Bhatti here, keeping in mind that they got 11 off the last over. If they can manage 6 of this one, they're on track. Yeah,
truly. And he's bowling his third over now, Kashif Bhatti, so we might not see him bowling his 4 overs on the trot. Umar Akmal might save 1 over for the last. And when you got, yes, you were right, when you got 11 runs in the previous over, you can easily collect 6 singles. Catch it! Once again hitting it in the gap. Although 5 was pretty alert at short extra cover, but they still managed to pick up 1. That nagging length once again. The batsman in double mind, where to go back or come on the front foot. Easy, Aja fight! Once again, good running, really good running between the wickets, and I'm really surprised that Fike has not moved slightly ahead of the edge of the ring, because almost 3 singles have come in that direction. Sweeping it away on the leg side. Fetched that too much away from the off stump there. Ali Imran still got a single to it. 6 singles to end the over with. It's 90 for 4 after 13. They've had a few decent overs. Some overs fetching 11, some fetching 9, some fetching 10. Yeah, the bars clearly showed that they have not stopped getting runs. We haven't seen any maiden over so far. Third over being the most expensive one, where they lost that wicket of Jahanzeb Sultan. The batting power play clearly working in the favour of AG Real Estate Builders, but after that they have lost 3 wickets, but it's a good sign that Ali Imran is still out there. Another bowling change. Shahzeb Bhatti has been introduced into the attack. And he'll be breathing a sigh of relief, because Azan Tariq is back into the dugout, because he was definitely going after him. Ideally, AZ Real Estate would want Ali Imran to take over that role and take Shahzeb for some runs. Easy. Nicely played and really nicely fielded by Shahzeb Bhatti, going after the ball himself. Because there was this big gap on the leg side, no fielders inside the inner ring. Had he been staying still at the bowler's end, they would have collected 2 runs easily. A big shot attempted on the leg side. That is going into the stands. Don't worry about that. Chance for a spectator to take that catch, but the ball bouncing over his head. What a shot that was from Ali Imran. Saw that length early, went on one knee and smacked it over deep mid-wicket for a maximum. It kept going, that one. We have seen some towering sixes so far in this tournament, this one also being one of the biggest of them. Yeah, you had a chance of taking that catch, sir. Instead, he dug down. Should have gone for it. Right, 8 of the over already. Well, I've been in so many matches already, but I haven't taken any catch at the boundary ropes. Had that catch been coming my way, I would have dived even to take that catch. Same here, Zishan. Excellent stuff once again, getting 10 runs off the over. 100 up for AZ Real Estate and Builders. They are 100 for 4 after 14. Loving his intent, I'm loving his approach. Taking singles consistently and dispatching a loose delivery if he gets one. 35 dot balls in the first 14 overs and more number of singles, 34 singles that they have taken, and the boundaries have come along with them as well. Just 3 extra runs so far for Eshaal Associates, so they have been pretty clinical with their bowling effort. They've got so many bowling options. Now we are witnessing another bowling change. Kashif Bhatti, as we anticipated, has now been removed from the attack, and Khushdil Shah is going to roll his arm over. Both these batters need to give Khushdil Shah some level of respect as well. He has the experience behind him to trap one of these batters.
Good ball. Really good ball this. Yeah, they do need to give respect to Khushdil Shah. Otherwise, if they're going to spoil his mood, then you never know what Khushdil Shah can do in the second innings. Ouch. I didn't even think that far ahead. I was just talking about his bowling. But yes, you're absolutely right. One player you wouldn't want in an aggressive mood. That's a beauty of a ball. Once again, that stump cam will suggest how late that ball turned and how far that ball turned away from the right-hander. That is just perfection from Khushdil Shah. I mean, you couldn't ask for a better length and a better line. Not easy for anyone. Going for the reverse sweep, and that has been put down. It's Mohammad Faik there at back foot of one, and I think it carried to him. Although the replay will suggest what happened on that ball, but although he was driving forwards. Slightly short on the length, pulled away nicely. Protection out there in the deep. Khurram Shehzad is going to throw it back. 3 runs coming in that opening over of Khushdil. After 15, it's 103 for 4. Faik probably wasn't expecting Rizwan to play that sweep. He played it really well. Lost their 4th wicket on 70. Ali Imran and Rizwan trying to consolidate here. Yeah, we have seen 2 decent partnerships for AZ Real Estate and Builders. 45 runs for the 2nd wicket when Azan Tariq was batting, and now a partnership of 33 between Rizwan and Ali Imran. And this partnership now holds the key for the batting side. They need to continue. In fact, they need to bat out full 20 overs. Kashif Bhatti changing his end for the last one. A bit of a fumble by Arshad Iqbal on square leg, allowing the batters to come back for the second. Change of ends now for Kashif Bhatti, bowling his final over from the other end, and Rizwan is not going to let him settle. Especially when you play a sweep shot against a spinner. Because that what happens. Of the next ball, they will try changing their line and length, and you can easily maneuver the ball into the gaps and collect those runs like that. This is brilliant running by Ali Imran and Rizwan. They are doing so well at the moment, playing according to the situation. 4 runs already off the over. That's half the job done. Easy, Khuja. On the pads, working away towards mid-wicket. Kashif Bhatti going after the ball himself. It's his last over, Kashif Bhatti. He has been really good so far, picking up 2 wickets. Rizwan has looked so good till now. He just needs to stay there. We've seen so many batters impress with their batting skills, but then they have a momentary lapse in concentration. Taking the face of the bat straight to Shahzeb towards short third man, and this has been an exhibition of running between the wickets. It's evident that these two have played a lot of cricket together. They have brilliant chemistry. A decent over this so far, 6 runs off it. Good batting, really good batting. Rizwan is starting to enjoy himself now. He has that smile which he didn't have when he came to the crease. You could see some pressure in his eyes. This is where I think Umar Akmal needs to be a little proactive. They are playing an extra seamer, so they can introduce a fast bowler at this stage. You don't have to worry about the depth overs because Khurram Shehzad will be there. Arshad Iqbal also has an over left, so Ali Khokar might be a good option because the spinners are usually wreaking runs so far. After 16, it's 111 for 4. Kashif Bhatti is done for tonight, picking up 2 wickets for 21 runs in a spell of 4 overs. जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट
जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे, जीत के जियो। Back foot. Don't think Umar Akmal is going to take that risk again. The crowds, well, they are already enjoying this first match. Remember, 2 matches are scheduled to be played every day in this Maple Leaf HD 38 Corporate T20 Cup. It's the first match, a virtual quarter-final, you can say, because the winner goes through to the semi-final. Everything to play for both these teams. They are in it to win it. Arshad Iqbal being brought back for his final over. He's just given away 12 runs. How special is that, Zishan? Yeah, in a T20 format of the game, if you are giving runs at 4 runs and over, that's exactly what a captain wants from you. Would have been much better if he would have picked up few wickets as well, but starts off with a shorter delivery, pulled away into the gap. Khurram Shahzad working that one off, and a couple taken yet again by Ali Imran. I'll take a pacer who gives away just 4 runs per over any day, Zishan. Yes, it's the cherry on the top if he manages to take a couple of wickets. But if you can manage to squeeze the runs, you add that pressure on the batting lineup, and they end up giving away wickets from the other end. He was slightly unlucky as well. He beat the left-hander outside the off stump on a couple of occasions. Other day, you could have easily get an outside edge and pick up few wickets. Sometimes he bowled well enough without getting wickets. Outside edge! Well, that was very well stopped by Bismillah. Really good reflexes being shown here by the wicket-keeper. Almost beaten there, Ali Imran. He was so lucky to get a faint outside edge, but Bismillah Khan did so well. That ball was travelling, barely managing to put his hands to that save. A definite 3 for his team. Yeah, and in that process, he might have done some damage to his fingers as well, Bismillah Khan. Something he won't want at this stage. He was looking to come down the track there, Ali Imran. He was looking to blast that on the offside. Just getting his part of the bat at the last moment, and luckily for him, the ball didn't hit the stumps, and now he's getting some treatment. That magic spray has arrived. Yeah, but the magic sprays helps. It doesn't fix the pain. He will be carrying it for a couple of days at the least. He still has to bat. Bismillah opens the innings for his team. Considering the fact that he'll be opening the batting later on in the second innings, he might not be able to grip the bat properly. But he definitely looks in some pain. He looks like he's in a lot of pain. But he's a strong lad, Bismillah Khan. And even with the gloves, these tend to hurt a lot, especially when you have a bowler like Arshad Iqbal who bowls at a decent pace. Well, they have the luxury of having Umar Akmal in their side, because Umar Akmal has also kept wickets for Pakistan during his playing days. So if Bismillah Khan is in some pain, you can also give him rest, bring in a substitute fielder, and let Umar Akmal keep the wickets so that he'll be fresh in the second innings for the batting. That might not be a good sign for AZ, in fact, Eshaal associates, because if Bismillah has that much pain, he might not be comfortable when he's batting as well. So I'd rather hope he is okay, and he continues. Yeah, true, but there are still 4 overs almost remaining in their innings. He might get better treatment in the dugout, but let's hope he's all okay to keep the wickets as well as to bat in the second innings. Meanwhile, a very good partnership being building between these two. 44 for the 5th wicket between Rizwan and Ali. Bismillah Khan is taking off his pads, so it seems like Omar Akmal might take over, or they might have another option. But Omar Akmal is standing there with Arshad Iqbal.
He has no idea what's happening there. He's least concerned, Umar Akmal. He's like, huh? Do I have to do it? He's just looking away so that no one asks him to keep the wickets, maybe. They might be having another option. For sure. Like, for sure. Well, he's already having few tapes in his left hand, and now he has hurt another finger in the right one. Bismillah Khan. And just as we anticipated, another player has now been asked to stand as a wicket keeper instead of Bismillah Khan. I hope he's okay. Eshaal associates need Bismillah Khan at the top of the order. And the question is, if he cannot open the battings, can Umar Akmal take that task on his shoulders? He can. He's done it in the past. Yeah, he has done it in the past, and we all know how aggressive he is. He's a wonderful player. I mean, he's the one who can definitely make use of the fielding restrictions early on. And let's not forget, Umar Akmal hasn't been able to score big in this tournament yet. It might help him to come as an opener. Shorter in length. Is that going to be taken? No, just bounced in front of the wicket keeper. How often we have seen that breaks like that usually turn out to be a blessing in disguise for the fielding side, because the batters then lose their momentum, they lose their concentration, and Arshad Iqbal almost picked up that wicket of Rizwan. Rizwan was putting away bad deliveries before that break. He is playing on 19 off 19. The question is, when are they going to take charge here? What do they have in mind? 140, 150? And for them to reach 150, they need to start doing something right now. Well, if they don't lose any wickets from here on, they can even go past 160. Good Yorker. Nicely played by Rizwan yet again. Well, now since they don't have a regular wicket keeper behind the stump, so they can also try those cheeky shots, opening the face of the bat, playing it just wide of the wicket keeper. Especially when a bowler delivers outside the off stump, but still it's a very risky shot. Right then, Ali Imran looking good. Already has 25 to his name of 17 deliveries. What can he do here for his team? Surely he needs to stay there till the end. Even if you look at the balls remaining, just 22 balls now remaining in their innings. Just 20 balls, in fact. Driven on the outside. This time the fielder at deep extra cover. Khush Shah was standing at the edge of that ring. I love Ali Imran's fitness as well. He's absolutely ripped. You might not be seeing that on the screen. But if you see him live, he's got the shoulders of a proper bodybuilder. He looks so fit. Yeah, he's flaunting those triceps, that's for sure, by having those sleeves rolled up. But fitness is the key. I mean, if you are fit enough, then you can play any format of the game. And to play a longer innings, even in this shortest format of the game, you need to be fit enough. Oh my God, what a shot that was. He was looking to reverse sweep that. A Yorker outside the off stump, and he has made a mess of it. A bit too overambitious there, Rizwan. Yes, his team needed runs, but that's probably not the way to get them, especially against Arshad Iqbal, who is just too experienced to let you hit him like that. He got into an awkward position. There was a big gap between these two legs, and Arshad Iqbal found it. We have been mentioning it before, how well he has bowled. Finally picked up his first wicket of the final ball of his spell. Rizwan Ali walking back after scoring just 20, and it's 116 for 5 after 17.
How easy is it, Zishan, to sit here and talk about what the batter should have done? Mishal Khan coming onto the crease. Yeah, it was a premeditated stroke. He had already made up his mind that he is going to be playing that reverse sweep. No matter what land Arshad Iqbal is going to be landing in. But Arshad Iqbal, on the other hand, sticking to the basics, bowling at the block hole towards the end of the innings and finally getting some reward. Arshad Iqbal not at all impressed. You can't do that to me, son. That's what he was saying there to Rizwan. Fine leg coming inside the circle now for Khurram Shehzad. Shot on the offside. How well he has blazed that one away. It's into the gap. Back up. And they decided not to come back for the second one. But that shot clearly deserved a few more runs than a single, Danish. He hit it a bit too well. Unfortunately, it was too square and went straight to extra cover. If it was straighter, he could have gotten more. Thank you. Ali Imran looking good. Can someone support him here? Play the role of a power hitter, score some big runs. Once again, a no ball has been signalled by the on-field umpire. He's definitely having some issues with overstepping in this tournament. He bowled a no ball in the very first over of the innings and now has bowled another one. You would hardly see Khurram Shehzad not bowling a no ball. A pretty big one there. Why do I get those memories all over again? That was just too unreal for me. I mean, he was like a foot outside the crease. Talking about your memories. That happened good 13 years ago, but still all fresh in my mind. A big shot down the ground, making full use of that free hit, Ali Imran. Hitting it just to the right of the squash court and getting yet another maximum of the innings. And tell you what, it's another no ball. That is another no ball and the free hit is going to continue. I beg your pardon for that excitement. But that was so very well hit. Right in the slot by Khurram Shehzad. Probably not the right ball when you're bowling a free delivery. He's gifted another one. Ali Imran, can he take advantage of the second free delivery here? Well, he should. Won't be surprised if he will. Khurram Shehzad now having a word with his captain Umar Akmal. Not at all happy, Umar Akmal there. He realizes that these runs can be really difficult to chase down. I mean, a difference of 15-20 runs can be it. Yeah, exactly. And I think Ali Imran was waiting for an over like this. Shorter. He missed out. It was there to be hit. Might have been a slower delivery attempted by Khurram Shehzad. Just a single taken, but if you look at this over, just two legitimate deliveries have been bowled and they have managed to collect 11 runs of it. This is a lesson for all the youngsters watching out there. If you can stay on the crease, you will get the runs. Giving away your wicket is the worst thing you can do as a batter. Ali Imran taking his time initially and now unleashing his power. Full toss. Hitting it into the gap again. They're running the first one hard. Will they come back for the second one? Yes, Ali Imran is running towards the danger end, but he gets there. Good stuff. Can we give that extra single to Ali Imran? Because he made that possible. Mishal had no intentions of coming back for the second, but Ali Imran made sure he pushed him hard enough. You see that in the replay. As soon as he saw that, the ball going into the gap between mid-wicket and long on, he straight away asked his partner to come back for that second one. And you were right, Danish. Few runs towards the end of the innings can make the difference in the outcome of the game.
That's the length, that's the line. He should be bowling much more, but making sure that his foot lands behind the crease. Khurram Shahzad has played at so many different levels. He needs to control this because we've seen him do this in PSL regularly. Yeah, the first game that Peshawar's Army were playing against Karachi Kings, they were supposed to defend 13 runs in that over, and he bowled a no ball against Imad Wasim. And Babar was livid with him. Again, blasting it wider of long on. Only going to be a single, but if you look at the contacts of the game, this is a very good over for AZ Real Estate and Builders. This over has literally made the match for AZ Real Estate and Builders. Anything above 150 on this track in these conditions will not be easy for Eshaal Associates, no matter how strong their batting lineup is. Let's not forget, AZ Real Estate and Builders do have a decent bowling attack. And on top of it, we don't even know whether Bismillah Khan will be coming out to bat or not because of the injury that he just sustained a few overs ago. Slightly fuller, again hitting it straight to that fielder at mid-off. Another single taken. 16 runs coming in that over from Khurram Shahzad. After 18, it's 132 for 5. Right then, this is how AZ Real Estate and Builders are doing at the moment. At a current rate of 7.33, they will manage to score 147. Surely they will be looking for 150 plus, even 156 or more than that even. And does Khurram Shahzad have one more? He does. He does. He might not be bowling it. Yeah, Umar Akmal might take a gamble here. I think he might give an over to a spinner just to break this partnership, just to make the batter come out of the crease and attempt something different. Honestly, I would have backed Khushdil Shah any time of the day. He just gave away 3 runs. He was getting so much done. He was bowling at such a good length and line. Yeah, instead he has decided to give the over to Shahzad Bhatti, who has been a little expensive. 26 runs he has given so far in his first 3 overs, and Khushdil Shah might have definitely been a better option. Flat batted it. It's a flat hit. It's out of the ground. What a shot this is from Eshaal Khan. It's his first aggressive stroke, and that has clearly landed outside the boundary ropes. That was a superb hit from Eshaal Khan. Gave it the kitchen sink. Slogged it over long on. Getting a maximum. Shahzad Bhatti continuing to leak runs. And I mentioned it before, it might be a gamble. He goes for one more. It's up in the air. Shahzad Bhatti running backwards, and he takes an excellent catch. That is never easy, especially when you are running backwards, looking to take it over your shoulders. But how well has he judged that? I don't mind that, honestly. Eshaal Khan had the right idea. Managed to loft it to Shahzad Bhatti, who took a brilliant catch running backwards. How well did he place himself under the ball, kept his eyes on it and taking it convincingly. Yeah, although he picked up a wicket, but he wasn't looking that happy. Eshaal Khan walking back after scoring 11. It's 138 for 6. That score of 150 plus. Still 10 balls to go in their innings. Umar has just joined Ali Imran on the crease. Shahzad Bhatti will continue. Over Zishan Loya coming into bat at number 8 tonight, and something that he hasn't done before. The throw is at the bowler's end, and he survives. Shahzad Bhatti just asking the fielder that he should have thrown at his hands so that he could have taken the bails off. And most importantly, it's Ali Imran back on strike. He was double-minded there. That could have done him. That has gone high up in the air. I don't think it's going to be taken. It's going to carry no man's land. Yes, it does. And now they are coming back for the second one as well.
You've got to appreciate how quick Shahzeb Bhatti is. Ran after it like he was on fire. Colonel Zaka there, the man who looks after the proceedings here. Yeah, he has been present in almost every game. Shows how big a fan he is of this wonderful game of cricket. Oh, knocked him over. That's adding salt to the wounds. Did he need to play that sort of a stroke there, Ali Imran? There were still 9 deliveries remaining in their innings. And you have already collected 9 runs of the over already. A reverse sweep. The ball getting an inside edge, rolling onto his stumps. An embarrassing dismissal this. When you're playing so well conventionally, do you need to do that? But Ali Imran was looking to score out for 37 of 24. It's 141 for 7. Even though he got out cheaply, that was another good innings by Ali Imran. Played selflessly for his team, scoring quick runs. Yeah, he has been the top performer for AZ Real Estate and Builders in all the 3 games that they have played so far in the group stages. Would have been much better if he would have stayed there till the end. Ismail Khan, the captain, has now walked out there in the centre. He definitely did not need to play that sort of a shot there, Ali Imran. Now even the captain trying something cheeky. Managing to hit it over the wicketkeeper's head and collecting 2 runs. Still a better idea when you're playing a conventional sweep shot or a lap sweep. At the end of the over after 19, it's 143 for 7. Right then, it's the last over. Umar will be facing Khurram Shehzad, is it? Umar Akbar would be begging him not to bowl. No ball. Yeah, don't bowl a no ball and try not to concede a boundary as well. Well, that's something he cannot control, can he? Depends on the batter. Knocked him over. Once again, not a good shot selection in the end from Umar Zishan. Better delivery this time from Khurram Shehzad. He might have attempted an off-cutter. Umar Zishan again trying to be a little too clever, exposing his stumps. And the off-stump was disturbed. Well, it was a slower delivery, so if there was a chance to play that one, Umar Zishan out for 1. It was on that delivery. Failed to do that. Good start to this over for Khurram Shehzad. That's what few good deliveries can do. They were going along so nicely when Eshaal Khan and Ali Imran were batting. Abdullah Amin, meanwhile, is the new batter in, but now they have lost 3 wickets early in quick succession, and all of a sudden they might even get bowled out. Once again, nothing short in the end, and Ali Cooker takes it down towards third man. Play proper cricketing strokes there. It's lap sweep season for AZ Real Estate and Builders. Every batter is coming out and attempting a lap sweep. What's happening here? Just play straight. Just sit down and play the ball on its merit, instead of falling over while playing a stroke like that and getting bowled out towards third man. A golden duck for Abdullah Amin. It's 143 for 9, and Khurram Shehzad will be on a hat-trick. This is such a funny game, ain't it? Bowling 2 no balls in the last over, giving away more than a dozen runs. Coming back for the final over, Izhar Khan replacing the batter there and managing to take 2 consecutive wickets courtesy
last sweep season. Umar Zishan first exposed his stumps and then Abdullah giving a cash towards third man. So a hat-trick ball for Khurram Shahzad. He has decided to come around the wicket to the left-hander Izhar. Finally a convincing cricketing shot, getting a thickish edge out towards third man. Negating that hat-trick, getting a single Izhar. Arshad Iqbal was baiting the batters for a second. He was coming at it very gently, inviting or asking the batsman to come for the second. He is a pacer, so he has a good arm. Ismail back on strike now, just 3 deliveries to go. Surely they need to score more than 150 after what they've done. Yeah, even 160 was on the cards, but because of the wickets that they have lost the previous 2 overs, they're going to fall well short. Once again, brilliant piece of wicket keeping by the wicket keeper. It's not easy to stop those, because specifically when you are moving away from the line of off stump. That's how Umar Zishan lost his wicket in the very first ball of this over, and then Abdullah Imran looking to paddle it yet again. And Ali Coker taking a good catch towards third man. Overall, this is turning out to be an excellent over from Khurram Shahzad. He has kept his foot behind the popping crease. He hasn't given away any boundaries, and at one stage he was on a hat-trick as well. Getting an inside edge again. Singles won't hurt Eshaal associates at this stage. What a comeback this has been for Khurram Shahzad. Just giving away 3 runs, getting a couple of wickets along with it. Well, he took our comments too personally. As he should. I'm sure he expects better of himself. Yeah, he has all the ingredients of becoming a very good fast bowler, Khurram Shahzad. He can bowl a very good slower one. He's got a very good yorker. He has got decent pace. Slightly slower. The wicketkeeper aims at the stumps. Even the bowler misses. The wicketkeeper might be appealing for a run out there. The decision, although, has been referred to the third umpire. We'll have to see whether they completed that second run. And if they do, which means AC Real Estate and Builders will finish off their innings on 148 for 9. Mr. Jeem thinking about the decision. Oh, that is definitely out. Gave up in the end. I don't think he saw the crease there. He didn't even bother landing his bat. As if he wanted to go to the dressing room much more early. He didn't stop running either. He kept running. Ran all the way back to the pavilion. Easy job for Mr. Jean. Just give it out. Just a single to end the innings. There you see another wicket at the final ball of the innings, which means AZ Real Estate and Builders have been bowled out for 147 in their allotted 20 overs, and a good job done by Eshaal Associates, especially in the last 2 overs where they managed to pick up 4 wickets. Zishan, this is a pretty decent score. From what we've seen till now in this tournament, if you manage to score above 140 in these conditions, and if you bowl well, especially if you take early wickets, you can win with this total. Yeah, but they will have to put up an excellent show with the ball, because they've got the likes of Omar Akmal, Khushdil Shah, Bismillah Khan against them, and we all know how classy player they are. They have represented Pakistan, and they have potential to chase down any target on any pitch. Eventually, Khurram Shahzad managing to take 3 wickets for his team. We have Hina Didar waiting for us on the sidelines. Let's see who she has with her. I have with me Khurram Shahzad, bowler of Eshaal Associates. You played very well. आपने 3 wickets लिए. Well, बताइए कि आप अपनी performance के हवाले से क्या कहेंगे? जी सबसे पहले अल्लाह का शुक्र है कि कोशिश करते हैं परफॉर्म अच्छा हो जाए, बाकी इंशाल्लाह भी मैच बाकी है तो कोशिश करेंगे चेज करें टारगेट। फायदे में 148 रन्स का टारगेट मिला है, क्या लगता है आपकी टीम चेज कर पाएगी? जी जी हमारी बैटिंग माशाल्लाह काफी अच्छी है कि हम ये चेंज कर सकते हैं, इंशाल्लाह करेंगे चीज। तो क्या लगता है आपकी बैटिंग यूनिट को लेकर आप क्या समझते हैं कि उनकी बॉलिंग यूनिट को किस तरह फेस करने वाले?
हमारी बैटिंग जैसे आपको पता है काफी बड़े नाम है माशाल्लाह, एक्सपीरियंस है, उमर भाई हैं, बिस्मिल्लाह है, बाकी कुछ दिल है, इंटरनेशनल खेल चुके हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करें कि इजी चेज कर जाएगा इंशाल्लाह। वेल थैंक यू सो मच। खुर्रम शहजाद हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस उनकी तरफ से हमें देखने को मिली। बैक टू द कॉम बॉक्स। बहुत शुक्रिया हिना दीदार आपका। बिल्कुल ज़ीशान और मैं अभी यही बात कर रहे थे कि ये आसान नहीं होगा. दिस इज हाउ AZ Real Estate and Builders went about it. Yeah, Azan Tariq was very aggressive earlier on in the inning, especially against Shahzeb Bhatti, where he hit few runs on the offside. And that shot was a shot of the innings. So for me, Suleiman Salim did provide some resistance. That's how Azan Tariq lost his wicket. Kashif Bhatti was very good towards the middle of the innings. Once again, Suleiman Salim just chipping it towards Umar Akmal. Ali Imran came out with an intention of going hard after the bowlers. That was a big six towards the onside. Then the partnership was broken by Arshad Iqbal. Umar Zishan losing his wicket in the final over. So did Abdullah Imran. And at one stage, Khurram Shahzad was on a hat-trick. Absolutely, AZ Real Estate and Builders kind of lost the plot towards the end, forgot their basics and tried to do a bit too much, kept losing one wicket after the other, and Eshaal Associates using their experience to tighten the noose around them. This is how the scorecard looks like. Azan Tariq managed to score 36, Suleiman Salim managed 20 runs, Ali put up a good fight scoring 37 of 24, Rizwan managed 20 runs as well, and Mitchell with that 6 ended up with 11. Yeah, once again they got the stars but just couldn't convert those stars into big innings. Khurram Shahzad pick up the bowler, picking up 3 wickets. Arshad Iqbal picking up a wicket. Shahzeb Bhatti picking up 2 in his final over. Kashif Bhatti also getting 2 wickets tonight, and Ali Khokar picking up a wicket as well. So the target for Eshaal Associates when they will come out to bat in the second innings is going to be 148, and if they can manage to chase it down, they will straight away qualify for the semi-finals. We will take a short commercial break, and after that we'll be right back with the run chase in this match number 11 of Maple Leaf HD Putty 8 Corporate T20 Cup powered by Parkview City. It's into the gap, it's going to go all the way to 4. So it has been dropped. Taking this time, it is. That has gone for yet another maximum. Getting some catching practice here tonight so far. Exactly what we were talking about. Ali Imran getting the connection. हमारा और उनका खून जुदा था, जुदा है, जुदा रहेगा। जीनत के बगैर जिंदगी तो नहीं। मोहब्बत करने की इजाजत नहीं है। मोहब्बत एक आरज़ू से तेरे शहर की खाक में खाक भी हो जाए तो अब कोई गम नहीं।
जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे जीत के जियो। 1981 का वर्ल्ड सीरीज कप, पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न का मैदान। पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। ऑस्ट्रेलियावी टीम के मुकर्रर करदा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 209 रन। किम ह्यूज 67 रन के साथ नुमाया स्कोरर। पाकिस्तान की जानिब से सिकंदर बख्श की 4, जबकि इमरान खान और सरफराज नवाज की 1-1 विकेट। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 49.2 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान जावेद मियांदाद की 72 रन की शानदार इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ग्रेग चैपल की 3, जबकि टेरी एल्डरमैन की 2 विकेटें। पाकिस्तान की मैच में 4 विकेटों से फतह। वनडे क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ही के खिलाफ ये पहली फतह थी। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे जीत के जियो। मोहम्मद हफीज ने 218 वनडे मैचेस की 216 इनिंग्स में 32.9 की औसत से 6,614 रन बनाए, जिसमें 38 50s और 11 सेंचुरीज बनाने का एजाज शामिल है। उन्नीस 1981 का वर्ल्ड सीरीज कप, पाकिस्तान बमुकाबला ऑस्ट्रेलिया, मेलबर्न का मैदान। पाकिस्तान के कप्तान जावेद मियांदाद का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला। ऑस्ट्रेलियावी टीम के मुकर्रर करदा 50 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 209 रन। किम ह्यूज 67 रन के साथ नुमाया स्कोरर। पाकिस्तान की जानिब से सिकंदर बख्श की 4, जबकि इमरान खान और सरफराज नवाज की 1-1 विकेट। पाकिस्तान ने मतलूबा हदफ 49.2 ओवर्स में 6 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान जावेद मियांदाद की 72 रन की शानदार इनिंग्स। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से ग्रेग चैपल की 3, जबकि टेरी एल्डरमैन की 2 विकेटें। पाकिस्तान की मैच में 4 विकेटों से फतह। वनडे क्रिकेट की तारीख में पाकिस्तान की ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया ही के खिलाफ ये पहली फतह थी।
Hello and a very warm welcome to Maple Leaf HD Putty 8th Corporate T20 tournament. It's 11 match between Eshaal Associates and AZ Real Estate and Builders. While batting first, AZ Real have scored 147 for the loss of 10 wickets, and here umpires are arriving for second innings in the ground. And we have alongside in commentary former Test cricketer Sikandar Bakht. Sikandar, welcome. अच्छा स्कोर है 142 147 for 10 147 या 148 का टारगेट हो गया ना, तो 148 इज अ गुड स्कोर. अभी तक जितने मैचेस देख रहे थे कि थोड़े से लो स्कोरिंग थे, तो उसके हिसाब से ये मैच थोड़ा सा बेहतर लगता है रन्स के हिसाब से. तो अब देखना ये कि इन्होंने इसको कैसे डिफेंड करते हैं. और पिच वैसे ही चल रही है और उसमें कोई खास तब्दीली नहीं आई है, तो 148 का टारगेट और जो जीतेगा वो सेमीफाइनल. एशाल एसोसिएट्स जो हैं उनको चाहिए हैं 148 और 120 गेंदें उनके पास. बिल्कुल ऐसा ही है और बहुत ही शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया आफ्टर अली इमरान फायर पावर्ड सम रन्स, क्विक रन्स फॉर AZ Reals and State and Builders. और यहाँ पर उमर अकमल बैटिंग करने के लिए आए, ओपन करने आए एशाल एसोसिएट्स के लिए, और उनके साथ वेल सरप्राइजिंगली एक बैट्समैन जो है बगैर हेलमेट के आ रहा है. मैं इस वक्त तो यही एडवाइस कर सकता हूँ कि नया गेम खेल रहे हो तो हेलमेट जरूर पहने. आजकल जो है बहुत जरूरी है हेलमेट पे. मतलब है कि गेंद लगने के चांसेस कहीं ना कहीं हो जाते हैं. जब आप शॉट्स खेलते हैं तो कई दफा आप अच्छे शॉट्स के ऊपर भी टॉप एज लग जाती है. ये तो सज्जाद इब्राहिम है, और मगर जो हमारे दूसरे भाई हैं जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे हैं, दिस यंग मैन इज नॉट वेयरिंग अ हेलमेट. उमर अकमल है. ओह, जबकि अभी दानिश अनीस हमें बता रहे हैं कि बिस्मिल्लाह को गेंद लगी है और जिसकी वजह से उनको वो शायद नहीं आए, इसलिए. अब्दुल्ला अमीन है बॉलर. लेफ्ट आर्म स्पिनर से आगाज करेंगे बॉलिंग का AZ Reals. और सरप्राइजिंग अली, हमने देखा कि बिस्मिल्लाह इंजर्ड हुए, विकेट कीपिंग भी आधी इनिंग्स में वो नहीं कर पाया, और यहाँ पर ओपनिंग पैर में भी इसी वजह से एशाल एसोसिएट्स के चेंज है. उमर अकमल जो है खुद को बैटिंग में उन्होंने प्रमोट किया है और यहाँ पर वो एज एन ओपनर बैटिंग करने के लिए आए. तो दूसरी चीज ये है कि ये डू एंड डाई वाला मैच है, तो उमर अकमल एज अ सीनियर प्रो, और उनको चाहिए, उनको बहुत एक्सपीरियंस है हर लिहाज से. तो वो हो सकता है उसकी एक और वजह ये भी हो कि वो खुद आए हैं ताकि वो एक अच्छा स्टैंड दे सकें. हो सकता है मैच जिता कर ले जाएं, इसलिए कि वो सीनियर हैं. बहुत जबरदस्त इनकी आई साइट है और एक जबरदस्त टैलेंट है पाकिस्तान का. अब देखते हैं कि आज ये कैसे खेलते हैं. इससे पहले हमने बहुत कम देखा है उमर अकमल को एज एन ओपनर खेलते हुए. लेट्स सी कि आज वो क्या ऑफर करते हैं. और यहाँ पर पहली बॉल कट की है, लेकिन कोई भी रन नहीं यहाँ पर मिलेगा. अच्छा आगाज अब्दुल्ला की जानिब से. तो सिकंदर, मैं यही कह रहा था कि बहुत कम हमने देखा है उमर अकमल को, ज्यादा ओपन नहीं करते, तो कोई डिफरेंट स्ट्रैटेजी के साथ आए होंगे यहाँ पर. देखें, वो एक बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, अगर वो ओपनर आ जाएं तो उनको कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता. और यहाँ पे तो वो खुद भी कैप्टन है, तो वो ये फैसला कर सकते हैं. अब इस जगह पे मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि जो बैट्समैन है ना, वो उसको थोड़ी सी चालाकी करनी चाहिए. जोर से मारने के बजाय उमर के साथ बातचीत करके हल्का हल्का पुश करके सिंगल्स ले, ताकि गेंदें जाया ना हो. देखें, 2 गेंदें डॉट हो गई हैं. तो यहाँ पर ये चीजें छोटी छोटी सीखने की हैं, जो कि हमारे यंगस्टर्स जो है खेल रहे हैं वो सीख सकें. और अच्छी कंट्रोल के साथ बॉलिंग कर रहे हैं. यहाँ पर लॉन्ग ऑफ के जो फील्डर है वो एक्स्ट्रा कवर, डीप एक्स्ट्रा कवर पर भागते हुए आए, बॉल कलेक्ट किया. और अब उमर अकमल यहाँ पर गार्ड लेते हुए, और वो फेस करेंगे अब्दुल्ला को पहले ही ओवर में. अब देखना ये होगा कि
क्या सेंसिबल बैटिंग यहाँ पर अकमल कर सकते हैं और कैरी कर सकते हैं अपने टीम का स्कोर यहाँ पर वाइल चेजिंग 148 रन्स। लेकिन लॉन्ग ऑफ लिया हुआ है और एक मिड विकेट ली हुई है जो कि 2 लड़के पीछे वो ले सकते हैं। बाकी सारे सर्कल में लॉन्ग ऑफ और मिड विकेट, ये 2 जगहों पे उन्होंने कवर किया हुआ है। और अच्छा चेक किया यहाँ पर उमर अकमल। अभी फिलहाल तो वो काफी सीधे बल्ले से खेल रहे हैं, थोड़ी सी टाइमिंग आंखें दुरुस्त करेंगे तो फिर शायद वो अपने पर खोलें। नहीं जी, आंखें खोलने का वक्त नहीं चाहते हैं और यहाँ पर डाउन द ग्राउंड आके खेला, लेकिन ये क्या आसान सा कैच छोड़ दिया और यकीनी तौर पे ये बहुत ही नुकसान पहुंचाएगा एजी रियल एस्टेट्स एंड बिल्डर्स को। हैरत अंगेज तौर पे आसान कैच था और उमर अकमल ने रन लेने की भी कोशिश नहीं की, निकल के याहू किस्म का शॉट मारना चाह रहे थे मगर नया गेंद है, थोड़ा भर के स्किट हुआ है तो गली के जो बैकवर्ड गली कह लें उसको, पॉइंट के बराबर में उधर गया था ये गेंद। और यहाँ पर कट किया और इस बार बखूबी फायदा उठाया इस बॉल का, बैकफुट जाके कट किया और ये 4 रन हासिल करेंगे उमर अकमल यहाँ पर। तो ये तो होता है, अगर आप कैच छोड़ेंगे तो फिर बैट्समैन आपको नहीं छोड़ेगा। बिल्कुल, उन्होंने उनको बताया कि जनाब आपने कैच छोड़ा है ना, अब आप तैयार रहें। बहुत अच्छा टाइम किया था ये चौके के लिए। और ये मोइन खान क्रिकेट एकेडमी के यंग बच्चे हैं और ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान का फ्यूचर है और यहाँ पर कितने दिलजोई के साथ ये क्रिकेट खेलते हुए आपको नजर आ रहे हैं अपनी स्क्रीन्स पर। और यही पैशन सिकंदर इन बच्चों का है जो कि फिर पाकिस्तान को मजीद फ्यूचर में स्टार्स भी देगा। यही उम्र होती है और ये बच्चे जो हमारे फ्यूचर हैं, कुछ नहीं पता इनमें कौन बाबर आजम है, कौन शाहीन है, और आप नहीं कह सकते। और ये बच्चों के जो दिल की ख्वाहिशें अगर आप देखें तो इनके भी एक फैन, ये भी उनके भी एक रोल मॉडल्स होंगे। अब देखिए, अजान के आते ही उमर अकमल ने हेलमेट मंगा लिया। मेरे ख्याल से उमर अकमल को हेलमेट शुरू से पहनना चाहिए। आप बहुत ज़्यादा अपने आप को रिलैक्स ना करें। और ये जो निकल के उन्होंने शॉट मारा तो हो सकता है उसकी वजह भी ये हो कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स थे और एक अच्छा मौका दे दिया है उमर अकमल को दूसरी टीम ने। बिल्कुल, अगर आजान के हवाले से बात की जाए तो बैटिंग में भी काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही सिकंदर इनकी। 36 रन इन्होंने स्कोर किए और बड़े क्विक वो 36 रन थे जिन्होंने एक टोन सेट किया एजेड रियल्स के लिए कि वो एक बड़ा स्कोर बोर्ड पर लगा सकें। और सज्जाद ने एक बार बड़ा शॉट खेला है और ये 4 रन की सूरत में इशाल एसोसिएट्स के टोटल में शामिल होगा। अच्छा शॉट, बहुत ही अच्छा टाइम किया है, बिल्कुल सीधे बल्ले के साथ सर के ऊपर से बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखें, बहुत उनका बल्ला देखिए कि आखिरी तक सीधा था। और ये फर्क पड़ जाता है कि इस पिच के ऊपर अगर आप सीमर से गेंद कराएं, और इसलिए कि गेंद पेस से आती है तो उसके साथ पेस से जाती भी है। और यहाँ पर लेग साइड पर खेल दिया है, पुल किया इस बॉल को, शॉर्ट लेंथ पर ये बॉल गिरा था। 1 रन हासिल किया यहाँ पर। जो सीमर्स होते हैं या थोड़े से फास्ट बॉलर कह रहे हैं, मीडियम फास्ट बॉलर्स, उनका इस पिच के ऊपर गेंद बड़ा अच्छा आता है और उसमें हिट लगने में आसानी हो जाती है। जो भी बैट्समैन अपने फ्लो से खेलना चाहता है उसको बड़ा अच्छा मौका मिलता है। तो बहुत अच्छा वो पहला जो शॉट था सज्जाद का, बहुत ही अच्छा था। मतलब एक अच्छा क्रिकेटिंग शॉट हम उसको कह सकते हैं। ये T20 वाला वो शॉट नहीं था कि जिसको आप कहेंगे जो सर उठा के मार दिया। बहुत ही अच्छा शॉट था। और उमर अकमल ने ये बॉल कट कर दिया थर्ड मैन की जानिब। तेज बॉल था और इतनी ही तेजी से वो थर्ड मैन के फील्डर के पास पहुंचा। 1 रन का मजीद इजाफा। यहाँ पर जो तारिक हैं वो थोड़ा सा शॉट ऑफ लेंथ गेन किए। उसके कट शॉट से आपको अंदाजा होगा कि थोड़ा पीछे गिरा है, तो इसलिए उन्होंने देखेंगे पीछे कितना गिरा है कि अकमल को टाइम मिल गया। असूलन थोड़ा सा गेंद अच्छे गुड लेंथ पे पड़े ताकि बैट्समैन आगे से जाकर इसको खेले। और ये ड्रोन जो आपको जियो सुपर पे कवरेज दिखा रहा है, एरियल व्यू कवरेज। और एक बार फिर सीधे बल्ले से खेला, लॉन्ग ऑन, और ये हिट हुआ लेकिन
बैटर जो है वो आसानी क्रीज में मौजूद थे। बहुत अच्छा सिंगल लिया है, दिस इज अ गुड कॉल। डेंजर एरिया उन्हीं का था, बैट्समैन का, सज्जाद का, इसलिए कि थ्रो उसी के एंड पे होनी थी, तो इसलिए उन्होंने बहुत अच्छी कॉल की और उमर अकमल ने इसको रिस्पॉन्ड भी अच्छा किया। ये नहीं कहा कि नो वेट देयर, कई दफा वो बड़ा प्लेयर कर देता है, यू हैव टू बी रेडी। और ये हमारे ड्रोन ऑपरेटर हैं और रोजाना बेचारे ये आते हैं, उसको उड़ा रहे होते हैं। और एच, लेकिन सेफ रहेंगे और अच्छी फील्डिंग थर्ड मैन रीजन के फील्डर की तरफ से। और यहाँ पर 1 रन 2 रन बल्कि 3 रन बचाया, अगर ये चौका होता तो 4 रन मिलते इस टीम को। मगर सर एक विकेट और लेने का चांस मिस कर गया। देखें डे वन से मैं कह रहा हूँ नए बॉल पे स्लिप होनी चाहिए। अगर आप नए गेंद के ऊपर स्लिप नहीं रखेंगे कैचिंग के ऊपर, तो फिर कब रखेंगे? एक अजीब सी मुझे कैफियत नजर आती है एज अ फास्ट बॉलर कि मैं नया गेंद कर रहा हूँ और मैंने स्लिप ना ली हो। कई दफा मुझे यकीन नहीं आता, मगर आपके सामने है कि एच तो लगा है। बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर फील्डर मौजूद थे। ये अच्छे फील्डर है, जो भी मिड ऑन पे खड़ा है इज अ वेरी गुड फील्डर। ये दूसरी दफा उन्होंने बड़ी जबरदस्त फील्डिंग की। 2 ओवर मुकम्मल हो गए, 13 बगैर किसी नुकसान के। इसके बाद मैच होगा जलील इसको रिलैक्स होने दो ना। और यहाँ पर सिकंदर कोशिश करनी चाहिए कि जितने ज्यादा स्ट्राइक रोटेशन साथ साथ चलती रहे, ताकि अपोजिशन पे भी प्रेशर आए और आपका जो टारगेट है वो अचीवेबल हो सके इस स्टेज के बाद। देखिए ये चीजें वो होती हैं, ये ग्राउंड मैन है यहाँ पे जो बड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं ग्राउंड की, और इन बेचारों को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हर रोज ये नई एक पिच बनाते हैं। और आप बिल्कुल सही कह रहे हो, इसमें तो दोनों बैट्समैनों का और ये जो कोच है उसका काम होता है कि बिठा के सबको समझाए कि आपने इस स्ट्रेटेजी से खेलना। बॉलें ज़ाया नहीं होनी चाहिए। 120 में 120 बॉल्स या 20 ओवर्स की जो गेम है उसके अंदर जो डॉट बॉल्स हैं वो एक मेरे हिसाब से बहुत बड़ी ज्यादती होती है। इसके लिए पहले ही जहनी तौर पे आपको तैयार रहना चाहिए कि जितना तेजी के साथ रन बना सके। और यहाँ पर बॉलर फील्ड सेट करते हुए और उमर अकमल जो है चारों तरफ देखकर यहाँ पर हल्का सा कट किया शॉट थर्ड मैन की जानिब। पहले ही उन्होंने फील्ड को जांच लिया था, पूरे ग्राउंड में फील्ड देखी और उसके बाद बड़ी चालाकी से ये कट किया 1 रन के लिए। ये डीएचए के सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे डीएचए के अंदर। ये हमें हर जगह नजर आते हैं, गश्त करते हैं और कोशिश करते हैं कि जितनी हिफाजत कर सकें जो लोग इधर डीएचए में रहते हैं। और एक बार फिर बड़े शॉट का चांस लिया और कामयाबी से चौका हासिल किया। यहाँ पर मिड ऑन के फील्डर के ऊपर से ये बॉल निकालने में कामयाब हुए और 4 रन हासिल किए। देखें ये गेंद थोड़ा सा पीछे गिरा था, उसको उन्होंने एक तरीके से पुल शॉट सा खेल दिया था लॉन्ग ऑन की तरफ, थोड़ा सा वाइड। अब लॉन्ग ऑन को पीछे भेज दिया गया है। अब देखने हैं कि ऊपर किसको बुलाया गया है। ये नाइस अब्दुल्ला, बहुत आसानी के साथ एक सिंगल ले लिया। देखिए यहाँ पर उमर अकमल हालांकि सीनियर प्रो हैं, उनकी मौजूदगी में सज्जाद बहुत अच्छा एग्रेसिव खेल रहे हैं। मारने दो अब्दुल्ला। ये टेस्ट क्रिकेटर सलीम जाफर है जो खवातीन की टीम के शायद आजकल सिलेक्टर है। और उमर अकमल ने इस बॉल को खेल दिया है अब 1 रन के लिए। यहाँ पर अब तक 20 रन बना चुके हैं एशाल एसोसिएट्स की टीम। और उमर अकमल अब तक बहुत मोहतात, उस पहले शॉट के बाद बहुत मोहतात खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक और चीज भी हो सकती है कि उमर अकमल जब ये देख रहे हैं कि सज्जाद बहुत अच्छा एग्रेसिव खेल रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को ठंडा रखा हुआ है कि मैं बाद में चार्ज लूंगा। जब तक सज्जाद की बल्ला चल रहा है, उसके रन्स निकल रहे हैं, तो व्हाई नॉट। चल अब्दुल्ला। और ये मिड ऑफ के फील्डर के पास बॉल गया। ठीक है क्विक चेंज बॉयज। ओवर में एक बाउंड्री के बाद अच्छी स्ट्रैटेजी है, जो अभी हम स्ट्राइक रोटेशन की बात कर रहे थे। यहाँ पर सिंगल हर बॉल पे आया है, तो उससे यह है कि प्रेशर रिलीज रहता है और सामने वाली टीम के ऊपर काफी प्रेशर होता है।
नाइस अब्दुल्ला। और उमर अकमल एक बार फिर दिफाई अंदाज में यहाँ पर अपना ओवर मुकम्मल किया अब्दुल्ला ने। 3 ओवर्स के बाद इशाल एसोसिएट्स 21 बिना किसी नुकसान के। And this is the drone shot of DHS Sports Club मोइन खान क्रिकेट एकेडमी। और ये अतराफ के रोज और साथ ही मौजूद क्रिकविस्टा जो कि मोइन खान क्रिकेट एकेडमी की रौनकों को बढ़ाता है। और अगर इस एकेडमी की मजीद बात की जाए तो यहाँ पर तमाम तर फैसिलिटीज मौजूद हैं एथलीट्स के लिए भी और जनरल पब्लिक के लिए भी। जिम्नेजियम से लेकर स्विमिंग पूल और तमाम तर सहूलियात यहाँ पर हाई क्लास फैसिलिटीज मौजूद हैं। तो एक बार फिर आजान तारिक जो है वो यहाँ पर गेंद करवाने के लिए आए हैं। अपने पहले ओवर में इन्होंने 8 रन दिए थे बिना कोई विकेट लिए। और यहाँ पर अपने स्पेल का दूसरा ओवर करने के लिए जा रहे हैं आजान। और लेग साइड की जानिब ये शॉट। फील्डर को यकीनी तौर पे थोड़ी सी मेहनत करनी होगी यहाँ पर। और अच्छी थ्रो। उमर अकमल रेडी नहीं थे दूसरे रन के लिए। मेरे ख्याल से यहाँ 2 रन बनने चाहिए थे, मगर होता है ना जो एक फिर देखें हल्की सी शॉर्ट गेंद। और उन्होंने पहला जो गेंद किया था ऊपर उस पर उनको जो स्ट्रेट चौका पड़ा था, तो शायद उसके वजह से वो थोड़ा सा खींच के करने की गेंद कोशिश कर रहे हैं, जिसके वजह से गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ हो रही है और उनको आराम से रन्स उनके ऊपर रन्स बन रहे हैं। उमर अकमल एक बार फिर कदमों का इस्तेमाल किया लेकिन इस बार कोई गलती नहीं की मिड ऑफ के फील्डर ने। और यहां पर उमर अकमल को बिल आखिर वापस जाना पड़ेगा। बिल्कुल निकल कर बहुत जोर की हिट लगाने की कोशिश की थी, मगर ये देखें बिल्कुल बैलेंस भी नहीं था उनका। और ये तो 30 यार्ड का जो सर्कल होता है उसको भी वो क्रॉस नहीं कर सके। बहुत ही सिर्फ 8 रन बनाए उन्होंने। 22 रन पे ये पहली विकेट गिरी है। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी 7 से 15 अप्रैल DHS स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे जीत के जियो। सही से पहले ही बाहर आ गए और यहाँ पर एक आसान कैच मिला एजेड रियल एस्टेट एंड बिल्डर्स को। और यहाँ पर एज ये एज थर्ड मैन की जानिब गया। 1 रन का इजाफा। अभी आप कह रहे थे कि शायद उमर अकमल जो है बाउंड्री लगाना चाह रहे थे। मेरे ख्याल से वो तो फ्लैटों के ऊपर गेंद फेंकना चाह रहे थे, मगर वहां तक गेंद गई नहीं। वेट का कॉल किया। नॉन स्ट्राइकर एंड पे जो बैट्समैन है वो रन चाहते थे, लेकिन सज्जाद ने कहा रुक जाओ, मैं ही अभी फेस करूंगा। देखिए जब आप नए बैट्समैन आते हैं ना, तो फिर आपको जरूरी नहीं है कि आप दूसरे बैट्समैन को बोलें कि मैं स्ट्राइक चेंज करूंगा, और सॉफ्ट हैंड से खेलें। सॉफ्ट हैंड से मतलब है कि बिल्कुल उसको सॉफ्ट हैंड से हल्का सा पुश करें तो आपको आसानी के साथ सिंगल बन
सारे लड़के इस वक्त देखें 30 यार्ड का जो सर्कल है उसके ऊपर से आ रहे हैं, कुछ लड़के तो उसके पीछे से भी थोड़ा सा स्टार्ट लेकर सर्कल के अंदर आ जाते हैं, मगर सब 30 गज दूर से आ रहे हैं। और अच्छा गेंद यॉर्कर लेंथ पे ये बॉल किया और आप देखें एक सिंगल बन गया, ज्यादा आपको कुछ करना नहीं पड़ा, पैडों पे लगा तो ये गेंद उसी तरह गया जैसे आप सॉफ्ट हैंड से खेलते हैं और ये आपको आसानी से सिंगल मिल गया, मगर उसमें दोनों बल्लेबाजों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, अंडरस्टैंडिंग तो जरूरी है। जब कोऑर्डिनेशन होगी पार्टनरशिप में तो वही पार्टनरशिप फिर कामयाब होगी और रन्स भी मिलेंगे, टीम को फायदा होगा। तो यहाँ पर अब तक अच्छा ओवर करवाया है तारिक ने, और एक बार फिर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, यहाँ पर एच किया और अंपायर की उंगली फिजा में। आजान तारिक को यहाँ पर एक और विकेट हासिल हुई। बहुत ही सुपर कैच, मैं कहता हूं विकेट कीपर का ये एक बहुत ही जबरदस्त कैच दिया है उसने। वाओ, आप किसी भी इंटरनेशनल विकेट कीपर से इसको आप कंपेयर कर सकते हैं, चाहे वो सरफराज हो, चाहे रिजवान हो, हमारे जितने भी बड़े विकेट कीपर गुजरे या खेल रहे हैं इस वक्त, आप उनके साथ इस कैच को मैच कर सकते हैं। उन्होंने पुल करने की कोशिश की, 1 रन बनाकर आउट हो गया, 24 पे 2। जियो सुपर पे रमजान क्रिकेट का भरपूर मजा, भरपूर एनर्जी के साथ भरपूर क्रिकेट, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट के सुपरस्टार्स सरफराज अहमद, खुशदिल शाह, शान मसूद, असद शफीक, हैदर अली, आजम खान, अनवर अली, उमर अकमल, फहीम अशरफ, साइम अयूब, मेपल लीफ एचडी पट्टी 8 कॉर्पोरेट T20 कप, पावर्ड बाय पार्क व्यू सिटी, 7 से 15 अप्रैल GH स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी से बराह रास्त। सेफ जियो सुपर पे, जीत के जियो। बड़ा सुपरमैन एफर्ट कहेंगे इसे विकेट कीपर की जानिब से, बड़ी अच्छी एफर्ट की गई अपने लेफ्ट की जानिब लपके बॉल को और 1 हैंडेड ब्रिलियंट कैच यहां पर लिया। बिल्कुल, मैंने जैसे कहा किसी भी स्टैंडर्ड के हिसाब से ये अब ब्रिलियंट कैच जिसे कह सकते हैं, इज अ सुपर कैच, जबरदस्त कैच। और इस किस्म के जो कैचेस होते हैं विकेट कीपर के, ये आप बॉलर्स का दिल जो है वो 4 गुना बड़ा कर देते हैं। जब इस किस्म के आप कैचेस पकड़ लें तो इस्माइल खान हैं जो नए बॉलर, थोड़ा सा वार्म अप हो रहे हैं, और जब इस किस्म के कैच पकड़े जाएं तो बॉलर का दिल बहुत बड़ा हो जाता है। और ये इसमें देखें 50%, मैं कहता हूँ 60% जो है मार्क्स जो है ना विकेट कीपर को जाने चाहिए। बहुत ही जबरदस्त कैच। तो यहाँ पर अब सज्जाद यकीनी तौर पर प्रेशर फील कर रहे होंगे क्योंकि उनके सामने विकेट गिर चुकी है। खुशदिल शाह ने उन्हें ज्वाइन किया है। और यहाँ पर ये शॉट सीधा खेला है और गैप में होते हुए ये बॉल चौके की तरफ चली गई है। यहाँ पर 4 रन हासिल होंगे सज्जाद को, और नो बॉल का भी इशारा किया है यहाँ पर अंपायर ने। तो डबल डेक सज्जाद जो हैं बहुत अच्छा खेल रहे हैं, और ये उनका दूसरा शॉट है जो कि उन्होंने सीधा खेला है। ये देखिएगा नो बॉल थी और उसको बहुत ही सीधा स्ट्रेट खेला है जमीन के साथ। क्वालिटी शॉट है ये सज्जाद का। ये दूसरा शॉट है उन्होंने जो कि स्ट्रेट खेला। इसका मतलब है कि स्ट्रेट शॉट उनके बहुत तगड़े हैं और बहुत ही अच्छे हैं। बिल्कुल जैसे अच्छी क्रिकेट में शॉट मारे जाते हैं वो शॉट खेला है सज्जाद ने। अब ये नो बॉल पे फ्री हिट पे देखते हैं क्या करते हैं सज्जाद। फ्री हिट का भरपूर फायदा उठाया और कोई मौका नहीं दिया मिड ऑफ के फील्डर को। यहां पर एक और 4, और यहां पर सज्जाद अब फुल कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। ये शॉट भी तकरीबन स्ट्रेट बैट वाला शॉट था, बैकफुट पे जाके ये देखें, और उन्होंने टेप बॉल की तरह जिस तरह हम टेनिस बॉल पे शॉट मारते हैं, बहुत ही खूबसूरत स्मैक कर दिया उन्होंने थ्रू द लॉन्ग ऑफ। बहुत ही खूबसूरत शॉट। और अभी तक ये 3 चौके इधर मार चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत खेलते हैं यहाँ।
पर पंच करके रन लिया. Meanwhile, on the sidelines, Hina is there with a guest. Over to you, Hina. I have with me Salim Jafar, former Test cricketer. Assalamu alaikum sir. Thank you so much for joining us. सबसे पहले तो बताइए DHS स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान अकेडमी की जानिब से ये जबरदस्त रमजान टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? नेचुरली जो कराची की जो क्रिकेट है उसका जो मेन फेस्टिवल और जो सबसे बेस्ट क्रिकेट पार्ट है वो कराची क्रिकेट में रमजान क्रिकेट है. मतलब आप कराची में कहीं भी चले जाए, सड़कों पे चले जाएं, हर ग्राउंड में चले जाएं, आपको नाइट में क्रिकेट आपको नजर आएगी. और यही एक शाम है कराची के क्रिकेट का. और कराची क्रिकेट को मैं तो ये कहूँगा कि ये एक ऑनर है कि जो T20 क्रिकेट है वो कराची से स्टार्ट हुई है. बेसिकली अर्ली 70s में रमजान टूर्नामेंट होते थे उस वक्त नाज़िम जिमखाना में, और ये वहाँ से क्रिकेट ने जन्म लिया था T20 शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट ने. और आज देखें आज ये क्रिकेट कहाँ पहुँच गई है. एब्सोल्युटली. इशाल एसोसिएट्स और एजी रियल एस्टेट आपने सामने हैं और 148 रन्स का टारगेट दिया गया है. उमर अकमल आउट हो गए हैं. वेल, आप इस मैच को किस तरह देख रहे हैं और उमर अकमल की परफॉर्मेंस आपको कैसी है? फर्स्ट इनिंग थोड़ी मैं देखी है, नो डाउट पिच में थोड़ा ब्रेक है, टर्न है. 148 रन इट्स अ गुड स्कोर एक्चुअली, और काफी टफ होगा एक्चुअली. पावर प्ले को अगर अच्छा यूज कर लिया तो फिर ये अचीवेबल है, अदरवाइज प्रॉब्लम हो सकती है. आपने रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट के हवाले से बात की. आपके टाइम में आपकी क्या मेमोरीज हैं? उस टाइम पे रमजान क्रिकेट टूर्नामेंट किस तरह के हुआ करते थे और आज के टूर्नामेंट से आप किस तरह डिफरेंट पा रहे हैं? रमजान क्रिकेट जब स्टार्ट हुई थी तो 25 ओवर्स की होती थी वो, जिसमें कराची जिमखाना, आखान जिमखाना, नाजवा जिमखाना ये टूर्नामेंट्स होते थे. लेकिन ये डे टाइम में टूर्नामेंट्स होते थे. उसमें फ्लड लाइट का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था. जिस तरह क्रिकेट इंप्रूव होती गई, ग्रो करती गई है, तो अब ये क्रिकेट मतलब नाइट फेस्टिवल हो गया और लोगों के लिए अच्छा है. सहरी तक मैच देखते हैं, फिर जाके सहरी करके आप रिलैक्स करें. तो ये नो डाउट कराची क्रिकेट का जो चार्म है और मेन जो कोर चीज है क्रिकेट में, रमजान क्रिकेट है. DHS स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान क्रिकेट अकेडमी जो है, यहाँ पर बहुत से बच्चे यंगस्टर्स आके यहाँ पर ट्रेनिंग लेते हैं और जितने भी यंगस्टर्स हैं उन्हें तरबियत दी जाती है, आगे जाते हैं ज्यादातर जो क्रिकेटर्स हैं. तो इनकी खिदमत पर आप क्या कहना चाहिए? नो डाउट मोइन की जो अकेडमी है, जो इसने यहाँ पे क्रिकेट की अकेडमी है, बहुत अच्छी अकेडमी है. कराची में बड़ी फेमस है, बल्कि इनफैक्ट पाकिस्तान में बड़ी फेमस है. और मोइन के होने से ये एडवांटेज है कि यहाँ क्रिकेट काफ़ी ग्रो हो रही है. और मैं काफ़ी सालों से आ रहा हूँ इस रमजान टूर्नामेंट में यहाँ पर. नो डाउट क्रिकेट बहुत इंप्रूव हो गई. हर ईयर क्रिकेट बहुत अच्छी हो रही है. थोड़ा बीच में ये है कि कोविड की वजह से क्रिकेट ऑफ हो गई थी, लेकिन दोबारा जो स्टार्ट हुई है, थोड़ा अपसेट ये भी हो गया डिपार्टमेंट क्रिकेट जो बंद हो गई, तो ये क्रिकेट थोड़ी मोइन क्योंकि डिपार्टमेंटल बेस पे नाइट फेस्टिवल होता था, तो अब दोबारा ये जो स्टार्ट हुई है, नो डाउट ये बहुत अच्छी साइन है. क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिकेट ग्रो करेगी इससे. थैंक यू सो मच सर. सलीम जाफर, फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, हमारे साथ मौजूद थे. बैक टू द कॉम बॉक्स. और यहाँ पर कैच छूट गया है. खुशदिल शाह का आखिरी गेंद अच्छी की थी, लेकिन फील्डर ने मिस किया इस कैच अपॉर्चुनिटी को. इसी तरीके से यहाँ पर 5 ओवर्स मुकम्मल हुए इस बैटिंग पावर प्ले के. एक दफा फिर ये देखे, खुशदिल शाह ने हवा में खेला था, बड़ा शॉट मारना चाहते थे, लेकिन फील्डर जो है चूक कर गए यहाँ पर और एक आसान सा कैच ड्रॉप किया. फ्रस्ट्रेटेड हैं. एक दफा फिर आप देख सकते हैं कि मुझे बड़ी सरप्राइज हो रही है, जितने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स हैं वो यहाँ शॉट नहीं मार पा रहे. उससे पहले उमर अकमल नहीं शॉट मार सके, अब खुशदिल नहीं मार सके. 5 ओवर मुकम्मल हो गए, 43 for 2. और उसके मुकाबले में जो इंटरनेशनल क्रिकेटर के मुकाबले में जो यंगस्टर्स हैं वो बहुत अच्छी शॉट्स खेल रहे हैं. उमर अकमल ने भी मारने की कोशिश की, उनका कैच हो गया, खड़ी हो गई गेंद. यहाँ खुशदिल शाह ने कोशिश की और आई एम रियली सरप्राइज. जो प्रोफेशनल्स हैं, हाईएस्ट क्लास प्लेयर हैं, वो हिट नहीं लगा पा रहे. और मुझे अब ज्वाइन किया है मिस्टर दानिश, अजीज नहीं अनीस ने. हम आपको अजीज लगते हैं सिकंदर, हमारे लिए यही काफी है. नहीं, आप हमारे अजीज हैं. मीनवाइल अगर हम खुशदिल शाह के यहाँ पर रोल की बात करें तो बड़ा कलीदी किरदार होगा आज. अगर ईशाल एसोसिएट्स ने ये मैच जीतना है, खुशदिल शाह नीड्स टू स्टे देयर टिल द एंड एंड मैनेज द इनिंग्स, इवन दो सज्जाद इज प्लेइंग ब्रिलियंटली राइट नाउ. मगर ये कैच छोड़ेंगे तो कैसे जीतेंगे? Slow delivery this time. Khujdil Shah pouncing on it, hitting it all the way. In fact, it was a one bounce 4. Good connection for Khujdil there. ये बेहतर कनेक्शन था. उससे पहले जो उन्होंने मारा था वो गेंद खड़ी हो गई थी बिल्कुल
स्ट्रेट, वो सीधा सिंपल सा कैच हो रहा था, मगर अब लगा है कि खुश दिल शाह खेल रहे हैं। इससे पहले नहीं लग रहा था, ना उनके बारी में लगा है, ना ही जो है उमर अकमल के बारी में लगा। I mean, if you just keep dropping catches, especially अगर आप खुश दिल शाह जैसे प्लेयर को लाइफ लाइन देते हैं तो आपको बहुत भारी पड़ सकता है। नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर मौजूद, मैच से लुत्फानंदोज होते हुए, फैमिलीज यहाँ पर आकर मैच को एंजॉय कर रही हैं, which is amazing. खुश दिल शाह now 13 of 6. This time just short of length. Khush Dil Shah wanted to force it towards the onside. Time nahi kar paye us tarah se. But Sajjad is batting very well. Especially his straight shots are perfect. Perfect cricketing shots. He played 3 good straight shots, and that's very, very impressive. It's also about how much time these batters have spent on the crease. Sajjad abhi tak khasa time spend kar chuke hain is tournament mein. Slower delivery once again, just punching it towards a mid-off for 1 there, Khush Dil Shah. They need to keep rotating strike even if they're not getting the big runs. This is a Jio Super production. ना सिर्फ जियो सुपर की टेलीविजन स्क्रीन पर, बल्कि ये मैच आप लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए भी देख सकते हैं, www.geosuper.tv/live, or you can simply log on to Jio Super's YouTube page and watch the match live as well. That is if you do not have a TV set in front of you. मजेदार मैचेस चल रहे हैं यहाँ पर DHS स्पोर्ट्स क्लब मोइन खान एकेडमी में, मेपल लीफ HD पट्टी 8th कॉर्पोरेट कप T20 कप के, पावर्ड बाय पार्क सिटी. अच्छा बॉल था, और I have been discussing with my other partner that the best way to play this game is to not to miss singles, and this is what they are doing. You don't have to hit the ball, just play with your soft hands and pick up the singles. You don't need dot balls. Apologies for that, Sikandar. Exactly यही किया था इमरान अली और रिजवान ने AZ रियल स्टेट के लिए मिड स्टेजेस में. Slower delivery yet again, और इसको forcefully खेला खुश दिल शाह ने. Misfielding there by इमरान अली, conceding 4. इस किस्म के रन्स बचाने होंगे यहाँ पर AZ रियल स्टेट को. Well, Khush Dil Shah is the person. He's a very dangerous cricketer. When he's in a good nick, he's unstoppable. And what a good shot from him, showing his class. And you cannot drop a catch of Khush Dil Shah. Right after 6, it's 53 for 2. Eshaal associates have done well in the power play, scoring 53 runs despite the fact that they've lost 2 crucial wickets, one of them being of Umar Akmal, their captain. आज forcefully Umar Akmal को innings open करना पड़ी due to an injury to Bismillah Khan. हम उस मिडिल स्टेज की बात कर रहे थे सिकंदर, जब इमरान ने और रिजवान ने कंसोलिडेट किया AZ रियल स्टेट के लिए. हर बॉल पर सिंगल लेते रहे, एक बुरा बॉल आया उसका फायदा उठाया, इस तरह 9 से 10 11 रन पर ओवर बनाए. That's the way to go. Yeah, I think this is the way you should play the T20 game. You can't have dot balls. You have to keep on scoring runs, and when you start taking singles, then the pressure is on the fielding side. Then they will start bringing in the fielder, and you will have a chance to hit over the head. इजहार खान को अब बॉलिंग अटैक में लाया गया है. दिस गाय इज अ सीरियस टैलेंट. बहुत जबरदस्त बॉलिंग की अभी तक उन्होंने इस टूर्नामेंट में. Once again starting well there, इजहार खान. मोहतात अंदाज में सज्जाद ने इस बॉल को नच किया 1 रन के लिए, ब्रिंगिंग खुश दिल शाह ऑन स्ट्राइक. खुश दिल शाह को इजहार के खिलाफ नेचुरल एंगल मिलेगा. He will find it easier to score against Izhar playing with the turn if he can manage to do that. This time just outside the off stump. Khush Dil Shah cutting that well. Wanted to come back for the second. Could have been dangerous. That's a direct hit, but I believe Khush Dil Shah made it inside the crease.
As a result, they got one more. The on-field umpire is going to refer it to the television umpire. But I believe he was safe, Sikandar. You can't say anything from here. It was very close. And the batsman Sajjad has to be very careful. It was 2 runs. It was Khushdil Shah's end. And let's see. We're going to see through the third umpire's or TV umpire's eye what he thinks about it. No, I think he is safe. Yes. For all the youngsters watching, this is exactly the way to do it. A full stretch for Khushdil Shah, dragging his bat all the way along the crease. But I will say, if you see Rizwan, he would have dived from the middle of this. He is very dedicated as far as running in between the wicket is concerned, and is a brilliant runner between the wickets. See, it was a Khushdil Shah's call because he was coming to the danger end. But Sajjad did well to stop him, because if Sajjad answered that call, it would have been very, very close But for you Khushdil. have to run fast. You know, you have to be ready for a couple of runs, and you have to pick runs. Rather than that, you have to steal runs from the fielder. Absolutely agreed, Sikandar. If you run the first one fast enough, you can apply that pressure on the fielder as well. He might fumble as a consequence. Not out given by the television umpire. Khushdil Shah is proving to be lucky tonight. Is his day. Yeah, wicketkeeper did a very good job, though, and he took a brilliant catch. You must have seen it. Saw that, yes. Remind me of Wasim Bari's and Moin Khan's and Rashid Latif's and all those wicketkeepers. And we have Sarfraz and Rizwan. This time playing with the turn, getting the distance. Khushdil Shah, you beauty. Well, when you drop a catch of Khushdil Shah, then you have to be ready for this treatment. And this is typical Khushdil Shah. Playing with the spin there. Got the connection that he wanted. Right of the middle. That would give him a lot of confidence. Yeah, good ball. Just pulling his pace back a bit. I will say well bowled. That was good, smart bowling by Izhar. And he just, I think he was. That was a little bit slower. He changed the pace of the ball. Intelligent bowling by this bowler, Izhar. Nice, good ball. Flighting it once again. Sajjad doing well to take one off that, Sikandar. It's very easy to just defensively play that one and not go for a single. Yeah, he's doing a wonderful job, Sajjad, and he should keep himself quiet because Khushdil Shah is taking a charge. Izhar is already given 11 runs in his first 5 balls, but Khushdil Shah, when he's taking the charge, see, and so Sajjad should keep himself quiet, but straight to the fielder. Yep. Izhar saw Khushdil Shah charging. Increased the pace of the ball, cramped him for room after 7 at 65 for 2. Eshaal Associates have had some really good overs, especially the 5th one went for 18. The 7th one proving to be a good over as well for Eshaal Associates, courtesy some brilliant batting by Khushdil Shah. AZ Real Estate and Builders have some decent bowling options in their lineup. Abdul Amin being one of them. He started the proceedings for AZ Real Estate and Builders, managed to get a Man of the Match award in their first match as well.
But how good of a learning curve this is for these youngsters, Sikandar, when you're bowling against a batter like Khushdil Shah, who is super explosive, and you've got to hold your nerves and bowl well. It's a lot to learn. It's a brilliant experience. Using his feet once again, playing it straight as an arrow. The umpire will have to check with the TV umpire for that. I guess it just fell short of the boundary line. Another Khushdil Shah shot. Very well timed. I'm sure Jahanzeb must be watching him on the television when he's playing international cricket. Now he's bowling to him. He will get the idea how much power that Khushdil Shah has using his feet. Well, I will tell all those youngsters who are watching, you must see the footwork is very, very important. When you charge towards the bowler, you get on the pitch of the ball, and it's easier to hit when you make it a volley, half volley. This track does provide a lot of turn for spinners, and if you can negate that turn coming to the pitch of the ball, you make your job easier. Khushdil Shah also kept his shape there, didn't try to slog it or hit it too hard. All those batsmen, young batsmen, must use their feet when they are practicing. And you must, when you're playing, keep an eye on yourself and tell your coach to guide you. The way, see, the Khushdil Shah uses his feet and reaches the length of the ball. And then it's very easy to hit. The TV umpire is still trying to determine if that fell short of the side skirting or it went all the way. It is touch and go. That was so well hit. So yeah, 4 given. Khushdil Shah just checking his field. Using his feet once again, hitting it, going and gone. Yet another 6 for Khushdil Shah. He is breaking free here against Jahanzeb. Another stroke for a maximum. And he's asking the fielder, why did you drop me? Why? Just look at that. Typical Khushdil Shah. And he will be unstoppable, tell you, the way he's batting right now. Khushdil Shah is single-handedly taking the game away from AZ Real Estate and Builders here. Superb batting. See again the footwork. If we see again for the youngsters, he again uses his feet, reach this pitch of the ball to hitting it. Up. Got stuck in the nets. Right, that was hit really, really well. The net managed to catch it. He's just trying to free the ball right now. Can we have a new set of balls, please? No, yeah, they are looking for a new ball, but see, these nets are very important. They are covering that road, which is very, very busy during the daytime. And if you don't have these nets, well, these ball can be very dangerous. You talked about the importance of using your feet, but it's when you charge is also important. You cannot charge before the bowler leaves the ball from his hand. Otherwise, he can manage his length. Partnership already of 21 deliveries, just 21 deliveries. This is turning out to be a superb knock from Khushdil. Playing that one hard again, straight to the fielder at long off. Imran Ali throws it back. He's already on 39 of just 16 deliveries, Sikandar. 11 already of Jahanzeb's first over. Nice, very well bowled. Sajjad wanted to go big at it. Just checked his shot. No, I would say sensible batting by Sajjad. Very sensible. Because Khushdil Shah, the senior pro, is charging and he's scoring runs. So why should he take a chance?
We should stay there, and it's very sensible batting. Yeah. Firing that one in, Janzib. Kind of scared of Khushdil Shah. Well, smart cricket. This is what the youngsters must watch. See this. He's a, what you call it, a professional. He's a pro in cricket, but he's not hitting every ball. He's also picking up quick singles with a soft hand. That is the importance of his innings. He's hitting and he's also picking up singles, mixing it up. Once again, losing the plot here. Will Imran catch it? And he does manage to take a very, very good catch. Running forward in full flow. Diving towards the end. Comfortably taking that. Sajjad will have to go back. Well, that's commentator's cuts. My curse. So I thought he was doing it. He was batting so smartly. And suddenly he thought that why not I should also hit some fours. And very good. He's a very good fielder, this guy. And Sajjad Ibrahim is out for 28 and 78 for 3. Right, after 8, Eshaal 78 for 3. They've just lost a set batsman, but Bismillah Khan has finally been sent to the crease. I don't know how comfortable he is because काफी जोर से उनकी right hand की छोटी उंगली पर ball लगी थी when he was keeping behind the wickets. He must be feeling the pain, but he is a pro as well. मुख्तलिफ levels पर बिस्मिल्लाह खान ने शानदार innings खेली हैं. This might be a blessing in disguise for Eshaal Associates to have Bismillah Khan coming in now. That was a really good catch by Imran. Very good catch, and he's a very good fielder, this boy. Super fit. Yeah, super fit. I have seen him running around and see, a very good catch. Right then, Khushdil Shah. Oh, this time he smacks that one over deep mid wicket. That ball has gone to Hyderabad. Oh. On a serious note, it landed in the school right next to DHS Sports Club, Moin Khan Academy. Well, Khushdil Shah was aiming towards the golf course, and it landed in the school. As I said earlier, when the boys come, the youngsters will come in, for the studies, they will find so many balls over there. He gave that one the kitchen sink using the full flow of his bat. Tara ban gayi thi Sikandar ye ball. Tara ban gayi thi. Using his feet once again, this time playing it dead straight. It was flat. Went so quick. The fielder at long off did well to hold on to it. Bismillah Khan. All he needs to do is support Khushdil Shah, who is on fire at the moment. Already on 47 of just 19 deliveries. This is turning out to be a match-winning knock by the senior pro. Inside edge will fetch him one. Bismillah. Running a bit slow there. Again, a good single and a sensible single by Bismillah. So he knows that. He should know that. We were talking about Sajjad, but he suddenly, I don't know, lost his temper. Oh, hitting it well once again. Getting the distance. The umpire will go back to the television umpire to just check on it. 8 runs already off the over before this shot. Well, who's the poor fielder who dropped him? I'm sure he's gonna curse himself for the rest of the day tomorrow. It's a 6. Looks like it. He basically lost the match for his team.
Umpire Ali Heather will definitely signal a 6 here. They want to see it again just to be on the safe side. A couple of runs do matter. This is a quarter-final of sorts. Whichever team wins this one will qualify straight away for the semi-final. Well, the fielding side is going to blame his one fielder only who dropped Khushdil Shah. Sometime one catch really spoiled the whole show. The Very quickest well 50 of the tournament. Apologies for that, Sikandar. Just coming off 20 deliveries. What an innings this has been for Khushdil Shah. Oh, miscued at this time, and he goes back to the pavilion. Well, this time it's your curse, Mr. Danish Nisa Pogoch. And that was a straightforward catch. Well, anyway, Khushdil Shah played an excellent inning. As a senior pro, he showed everybody that he can hit, and it was really fun watching him playing here. Khushdil Shah gone for 53 of just 21 deliveries. It's 92 for 4. इन होठों की मस्ती तो समुद्रों को भी सैराब कर सकती है, फिर ये दूरी क्यों? मेरी आंखों के पैमानों में खो जाए, वहां सिर्फ आप ही आप है, बस आप। बंगाल को ये नामंजूर है। Here as well, he went for runs. He gave away 14 runs in the first 3 deliveries. Mohammad Waheed has just come in to join Bismillah Khan. Pulled back his length there. He saw the intent in Khushdil Shah. Banged it in a little quick and short. Miss it there from Khushdil. Instantly knew. This is good bowling by Abdul Amin. Nudged by Waheed. Wanted to come back for the second, but denied by Bismillah. After 9, it's 93 for 4. Mr. Ali Tareen along with Muin Khan. He's done such a good job with Tareen Academy, Sikandar. The team that they've brought for this tournament is so good. They look like a real professional bunch of cricketers. Always on their toes, always super energetic and displaying their skills to the best of their abilities. Well, I always admire all those people who are looking after the cricket and cricketers. Yeah, nice. Ali Tareen is here, and he's running an academy and doing a good job. Lahore Qalandar has been doing it for years now. So all those people who are spending money, time, energy for these cricketers is excellent. We have to appreciate that. Plus, Sikandar, we've always talked about the importance of having a proper coach and a seasoned cricketer at this level. Mohammad Wasim is looking after Tareen Academy. He's the head coach, and he instills a lot of discipline in the team. Yes, it's very important that you must have a good coach, a sensible person. Janzeb would be breathing a little easy now that Khushdil Shah is back. Good piece of fielding there by Abdul Amin, diving to save 1 run, even though it might not have been there. Well, it's a easy single. Good dive to stop it here, and saved one run for the fielding side. Eshaal need sensible batting right now. This time rocking on to the back foot, finding the gap beautifully, but another good piece of fielding at the boundary line there. Another diving effort, saving a couple of runs for his team. As far as the
requirement for both these batters is concerned, Sikandar, they just need 52 of 62 balls. A runner ball is all they need. They don't need heavy hitting from these batsmen. No rash shots whatsoever. Once again, a very good piece of fielding. Good commitment from this fielder at the boundary line. Very well done, young man. Some serious technique there. Managing to just push the ball to the fielder at square leg who had run towards him. Sweeping this one. I saw Bismillah practicing his sweep shot before the match. Well, sometimes I believe that you don't have to play a cross-match shot. He could have played it straight towards the long on or long off. It was almost a full toss. There are lots of ones there. Catch! Oh, well bowled, John Zabe. Just pulling his pace back. After 10, it's 96 for 4. Right at this stage, AZ Real Estate and Builders were 68 for 3. Eshaal Associates have managed 96, courtesy of blistering knock of 53 of 21 deliveries from none other than Khushdil Shah. There is a change in the com box as well. Zishan Khalid is going to be joining me. So all they needed was one senior pro to deliver. Khushdil Shah was the man for them today. Yeah, thank you very much, Danish. What an innings that was. 53 of just 21 deliveries, past his half century of this tournament, and he has now brought his team into the driving seat because the required run rate is well below 6 and over. Using his feet there, Waheed. We were just talking about what Eshaal Associates need to do right now. They just need to play sensible cricket. That's it. Yeah, but there are still chances of AZ Real Estate and Builders to come back into this game because we all know because Bismillah is not fully fit. He has come out to bat at number 6 tonight because of the injury that he sustained while keeping the wickets in the first innings. But I still believe, I think those drop catches earlier on in the innings for Eshaal Associates might have been hurting them. At this level, you let the pain drive you, Zishan. I know it's easier said than done, but pros do that. They use everything they can to just increase the level of focus that they have to play for their team. Catch it! Yeah, well said. And in such a high voltage game, when you know that a victory can make you go through to the semi-finals, even if you are half fit, you need to deliver. But they have definitely come out here with an intent, with a plan to chase down this target. Ali Tareen having a word with director of DHA Sports Club, Moin Khan, former wicketkeeper batter. Izhar continuing to bowl well. He was taken for runs by Khushdil Shah in his previous over. Izhar has been outstanding throughout the tournament, Zishan. Yeah, and I was surprised when he wasn't picked up in the playing 11 for the first game, but he has definitely made his presence felt in the next two. Yes, we talked in the previous game, few players are also doing some practice in the nets which are present here, just to the right of the gymnasium. I'd rather be there than here. Apologies for saying that. Apologies for my producer. But we love this game, don't we, Zishan? Yeah, we definitely do, but one ball still remaining in this over. Again, hitting it towards that fielder at short third man and picking up yet another single, Waheed. So they are doing the right thing by keeping the scoreboard moving. After 11, it's 101 for 4. Another view of the nets here at DHS Sports Club, Moin Khan Academy. Youngsters working on their game along with coaches. Over 2,000 students have passed from this academy, Zishan.
and they're playing in different clubs all over the country. And even international cricketers, the likes of Shaheen Shah Afridi and his father-in-law Shahid Afridi, when they are here in Karachi, they usually prefer utilizing these facilities. boundary chhod ke rehna. Wonderful shot being captured here. Meanwhile, Jahanzeb is going to continue. He was touch expensive in that first over when he was taken to cleaners by Khoshdil Shah. This time Waheed playing against the spin for one. There is ample space for singles. I wonder if AZ Real Estate and Builders are missing the trick here. They're giving away easy singles. And that is all Eshaal Associates need right now. They need to put some pressure. They need to make the batsmen do all the hard work here. Well, they're just waiting for one more wicket. And I think they can target Bismillah Khan. Because Bismillah has not been in the best of touches so far in this tournament, and he's carrying a slight injury as well. So why not have one more fielder inside the inner ring and make him work for those runs? This time he rocks back on the back foot and plays it to a deep mid wicket for just one. When the going gets tough, the tough get going. Such is the case for Bismillah Khan. He is a fighter, a proper fighter. And he will do just that for his team. They don't need explosive fireworks from him. All he needs to do is stay there till the end. Well, that has what the innings of Khoshdil Shah has done, because now they don't need to take any of those risks. He was the one who was hitting the ball out of the park very comfortably. Seemed like he was playing on a different track altogether. Such the brilliance that some players bring to the table, Dishan. Maybe he was trying to prove some point to the selectors, because T20 series is about to start against New Zealand, and I think he can be considered in the future endeavours. Pakistan is so blessed with talented batters these days, Ishan. It gets very difficult for a batter who is pushed out of the team to make place for someone else. Khoshdil Shah will have to keep on performing at the domestic level to make a comeback, and he can for sure. Definitely it's a good sign for Pakistan cricket that you've got so much bench strength. If Khoshdil Shah doesn't perform, you have got the likes of Iftikhar Ahmed, who can come later on in the innings and do some power hitting. After 12, it's 105 now for 4, needing just 43 more runs to win in the last 8 overs. Eshaal Associates. boys, थोड़ी सी एफर्ट चाहिए. 1 विकेट की बात है यार, 1 विकेट. Just 21 dot balls from Eshaal Associates, and that is significantly because Khoshdil Shah was going all guns blazing during his innings, where he scored the fastest half century of this tournament. Big appeal again, and the finger goes up. It's Bismillah who has been dismissed now, and we were mentioning it before that he's the one that AZ Real Estate and Builders will be targeting, and now they have got yet another big wicket. Is there a twist in the tail here? 43 needed of 48 balls. Bismillah Khan heading back to the pavilion. He never looks settled on the crease. Well bowled again from Izhar, ripping that one. You could see his fingers, forcing the ball to turn a bit more. Trapped Bismillah, who's gone for 7 of 11. It's 1 of 5 for 5 now. Required run rate is below 6 now. Even though they've lost 5 wickets, you still bank on the batting side to win it from here, unless the batters keep on making mistakes. Yeah, it's going to be their match to lose if they cannot pull it off from here on. As they still have 5 wickets remaining, the required run rate is well below 6 runs and over, and they have now got the experienced Kashif Bhatti batting at number 7. Kashif Bhatti is no mark with the bat. He has a few tons at the domestic circuit and first-class cricket. So you can count on him to win this match in this situation. Yeah, he showed some glimpses of aggression in the previous game as well. Kashif Bhatti, now he knows that the target is not a big one. Sensible batting
needs to be prevailed here from Eshaal Associates. He's right man, just the right man for the right job now, Kashif. You can say the same for Eshaal as well. He's not going to make it easy. Yeah, he's just into his third over and he has already picked up a big wicket. Can he get another one? सलमान बहुत अच्छे इधर Slightly shorter, hitting it straight to Suleiman Salim, standing there at backward of point. One thing is for sure, even now, Eshaal Associates will be feeling some sort of pressure. It's never easy when you are chasing down in a knockout game. No pace whatsoever on offer from Izhar. He wants Kashif to do all the hard work. But all they need is to nudge the ball around for his ones and twos. And they'll have the game in their pocket and a ticket for the semi-final as well. One more. I was really impressed with Azan Tariq earlier on as well, who picked up first 2 wickets. Although he put that catch down of Umar Akmal, but that didn't cost them too much because Umar Akmal again got out on a low score. And there was another catch being put down of his bowling. They have dropped a few, but generally speaking, we can see some good energy on the field from AZ Real Estate and Builders. Probably a bit too much. Once again, a good ball. I mean, you might say there's nothing such as too much energy, but if you get too excited, you can even drop easy catches. They just need to calm themselves down. It's a high-pressure match. Yeah, rightly so. A moment of brilliance in the game can change the course of this game. Once again, just playing it with soft hands, picking up yet another single. Kashif Bhatti. Single to end the over, but a successful one comes to an end from Izhar after 13. It's 108 for 5. Eshaal Associates have managed 108 so far. 5 batters have gone back to the pavilion. They need 40 or 42 balls. This game still belongs to the batting team unless they give it away. Yeah, AZ Real Estate and Builders will be looking for wickets because they know even if they can bat few thought balls here at Eshaal Associates, they still have that power in the batting lineup. So many easy singles all over the ground. There is no one close to the bat on the onside. That's just asking for a loss because you're giving away easy singles. Yeah, especially when a right-arm off spinner is coming over the wicket to a right-handed batter, because a single down the leg side is always inevitable. lovely ball. How was that? It's a good comeback from Jahanzeb. I still remember he was being struck for a boundary and a maximum in the first 2 balls of his spell by Khoshdil Shah. But his figures look much more respectable now. He's into his final over. Once again coming down the track there, Waheed. Jahanzeb just half stopping it. Good effort, Jahanzeb. Dot balls here will just add pressure on Eshaal Associates. And they need to apply more of it. Bring some of the fielders in. Cramp the batsmen for room. Don't allow them easy singles. I can sense a big hit here from Kashif. He plays it late. He plays it fine. He finds the gap. It's going to be touch and go. It has been stopped. Omar Loya backing up. And they have ran 3. Excellent running between the wickets. Good cricket all round there. That was an exceptional stop towards the boundary line as well. Ran after it like his life depended on it. It was a misfield there. A touch tough there. But how well did he dive and save that one? Appreciation for Loya as well, who was backing him up. Yeah, he was diving towards his left. The fielder there at back for a point just couldn't gather the ball.
again driven on the offside, this time by Waheed. Another single taken. They need to do something out of the box here. The captain Ismail Khan of AZ Real Estate and Builders. They shouldn't wait for things to happen. Instead, they should make things happen. Eshaal have managed 6 runs off the over already. 1 ball still to go. They've got what they needed from the over. Sweeping it. The impact was too much away from the off stump, and a better throw at the bowler's end. Chansib Sultan knows it. They wanted a much better throw right into the line of the stumps to cause a run out there. Instead, it's another single to end the over with. After 14, it's 115 for 5, needing 33 more runs to win in the last 6 overs. The hard-working ground staff here, always on their toes, always looking after things. I mean, it's a real blessing to have a staff who doesn't need to be told what to do. And not only they are busy during the match, but even busy before the match and after the games. It's almost like they're home these days. You can say the same for us. Well, you mentioned it yourself. You live nearby, Danish. Kashif Bhatti there going for that big stroke. Ishaq bowled it much slower through the air. The ball might have hit the body there of Kashif. Yeah, definitely the ball hit his right side before it went into the wicket-keeper's gloves. I believe Kashif is missing the trick here. He goes for a big one again. Top edge. Wicket-keeper's getting underneath that, and he has dropped it. It was his catch to be taken. How many drop catches have we seen here tonight from AZ Real Estate and Builders? It was his helmet that was the issue. While he was running, he was trying to fix it. It kept moving on his head. You'd see it better in this replay. You'd see him fixing it. Now, we're focusing on the ball, and rightly so. He just couldn't see it, Zishan. He never got near to the line of the ball there. There you see, even before he started it, he was adjusting his helmet. Even now, take it off, son. You don't need it. You cannot blame a non-living thing if you lose this game. Yeah, but he's standing up against the spinner. At times that can be really dangerous. If you get hit by a top edge, it can result in a serious injury. Although we do remember the time a decade back or 2 decades back, I didn't see any wicketkeeper using a helmet. We even saw batsmen play Gordon Greenwich and pacers without a helmet. Swept it. It's into the gap. Umar Loya is out there. Yeah, if you're playing at Perth on a bouncy track, then as a keeper you might be needing a helmet for every over, but we have seen the ball doesn't bounce as much. Yeah, an out ball can bounce, but I think it's into the fashion these days, wicketkeeper going with these helmets. I'd rather have it on, Zishan. I wouldn't want to be hit and lose a tooth or two. Well, I expected him to take it off after that drop catch, but he has still going on with that helmet. Meanwhile, well, that was an opportunity to be taken, and that would have definitely brought AZ Real Estate and Builders back into the game. How well Izhar has bowled tonight. He has absolutely bowled his heart out. He still haven't ball remaining. Can he pick up a wicket? Can he make this equation much more difficult for Eshaal Associates? 4 runs off Izhar's final over. They just need a couple more to balance the equation. Kashif Bhatti this time again coming down the track, just getting an inside half of the bat and getting yet another single. He'll keep the strike at the start of next over. After 15, it's 120 for 5.
It's 120 for 5 after 15. Just 5 overs now remaining into this game, and Eshaal Associates still needing 28 more runs to win. We saw a catch being put down. Well, it was a half chance because the wicketkeeper never just got underneath that. Would have been much more simpler for AZ Real Estate and Builders have they managed to pick up that wicket. Eshaal is done meanwhile with a spell of 4 overs, picked up just 1 wicket. We'll see another change in the bowling attack. Suleiman Salim, another leg spinner, has now been given the ball to roll his arm over. Ismail has given the ball to the leg spinner to ask Kashif Bhatti to go for that big sweep shot again. Obviously, Suleiman will be looking to turn the ball away from him, so they might get another outside edge. Ali Khan Tareen busy having few words with the ground staff. Starts off with a shorter delivery which has been carved away towards Umar Loya, standing there at deep cover. Still pretty even Steven this game, because you never know what's going to happen in the next ball. It's not over until the last ball has been delivered. Rizwan behind the stump, still making some adjustments to the field. Square leg has been asked to move much more finer. Mid wicket is inside. Slightly short and in end, again hitting it straight to that fielder at long off, picking up yet another single. Time for a change in the commentary box. I'm going to be replaced by Mr. Mohammad Asif Khan and Jafar Hussain. बहुत शुक्रिया ज़ीशान आपका। और इस वक्त हम मौजूद हैं और हमारे साथ मायनाज कमेंटेटर आसिफ खान भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और हम तमाम अपने मौजूदीन को जो है ना खुश आमदीद कहते हैं यहाँ मोइन खान क्रिकेट एकेडमी पे। और इस वक्त जो मैच जारी है वह इशाल क्रिकेट टीम का 122 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हैं और 27 बॉल्स 26 रन, यानी कि तगड़ा मैच हो रहा है और सुलेमान बॉलिंग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जाफर। सुलेमान को गालिबन मुझे देखे लग रहे हैं। सुलेमान, इनके बारे में बताता हूं अभी आपको। आसिफ एक अच्छा स्कोर किया था यहाँ पे और इस मैच को देखने के लिए काफी शायकीन भी मौजूद और इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। अगर हम देखें मोइन खान एकेडमी पे जो इस टाइम तगड़ी यहाँ पे बैटिंग भी जारी है इशाल क्रिकेट टीम की और ये सुलेमान आए और बहुत अच्छा शॉट मारा है और ये बिल्कुल होगा लंबा छक्का और बेहतरीन शॉट गिरा था ये गेंद, उसकी लेंथ को पिक किया और बाउंड्री लाइन के बाहर फेंका आसानी के साथ। बहुत टाइम था बैटर के पास इस शॉट की एग्जीक्यूशन में। सुलेमान एक मरतबा फिर वहीद को बॉलिंग करते हुए, बहुत अच्छी बॉल सुलेमान की और 1 रन लेने में कामयाब हुए वहीद। इस वक्त इशाल को 18 रन चाहिए 24 बॉलों पे। एक नॉर्मल टोटल जो है ना वो पूरा करने के लिए जो है ना वो इशाल की टीम जा रही है और ओवर का इख्तिताम हुआ। इस वक्त 16 ओवर्स का खेल हो चुका है। 130 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हैं और इशाल क्रिकेट टीम को 18 रन चाहिए 24 बॉलों पे। आसिफ, हमने देखा कि यहाँ पे बिल्कुल एक अच्छा मैच होने की तवक्को थी कि एक बड़ा तगड़ा मैच होगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये मैच इशाल ने बहुत आसानी से अपने खुर्शीद और की बैटिंग की वजह से जो है ना बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। इस टाइम बॉलिंग शुरू हुई, अब्दुल्ला बॉलिंग पर बहुत अच्छा सिंगल लिया है। वहीद का स्कोर हो गया है 21 और काशिफ इनके साथ बैटिंग कर रहे हैं 12 रन पे
मौजूद हैं। काशिफ 131 रन पे 5 खिलाड़ी आउट है। आसिफ में बात कर रहा था कि एक जो खासतौर पर रमजान की अगर हम बात करें, बहुत सारी जगहों पर क्रिकेट मैचेस हो रहे हैं। आपको पता है कराची के तकरीबन तमाम ही ग्राउंड्स जो है ना वो उन पे मैचेस चल रहे हैं। नाइट मैचेस का जो मजा होता है रमजान में बहुत ही आउट क्लास होता है। क्या कहेंगे खासतौर पर मोइन खान अकेडमी की अगर बात करें, जियो सुपर इसकी प्रोडक्शन कर रहा है। देखिए, मोइन खान अकेडमी की खास बात यह है कि इसका जो महले वकू है वो किसी और ग्राउंड को आपके मैसर नहीं है। यहाँ सी ब्रीज चलती है, चारों तरफ से ग्राउंड आपको नजर आ रहा है, खुला हुआ है, 3 अतराफ से तो ग्राउंड खुला हुआ है, तो हवा जो चलती है यहाँ वो बड़ी कारामत है। यकीनन उसका फायदा बॉलर्स भी उठाते हैं। एक जोरदार अपील, लेकिन नाकाम हुए अब्दुल्ला विकेट लेने में। यहाँ पे काशिफ ने एक खतरनाक बॉल को जो है ना सीधी बॉल को पांव निकाल कर मारने की कोशिश की लेग स्टंप पे, और सिंगल या एलबीडब्ल्यू का एक स्कोर। इशाल के बॉलर अब्दुल्ला एक मरतबा फिर तैयार हैं बॉलिंग करने के लिए वहीद को। बहुत ही तगड़ा शॉट और बहुत ही बेहतरीन कवर पे शॉट खेल दिया है वहीद ने। अगर इस शॉट की तारीफ की जाए तो यकीनन एक बेहतरीन शॉट मारा है वहीद ने। क्या कहेंगे आप? जी, वहीद भरपूर कॉन्फिडेंस में है इस वक्त इशाल की टीम, क्योंकि स्कोर इतना नहीं चाहिए। देखिए, फील्डर भी मौजूद थे, लेकिन अगर फील्ड नहीं करेंगे तो ये स्कोर बहुत कम है। फील्डिंग है, अच्छी है, आगे फील्ड रखा हुआ है, दायरे के अंदर फील्डर्स खड़े हुए सारे, लेकिन फील्डिंग का वो मयार नजर नहीं आ रहा फील्डिंग साइड की जानिब से। अदरवाइज जितनी टीमें हैं यहाँ पे इस टूर्नामेंट में शिरकत कर रही हैं, उनमें भी जो है ना जो लाहौर की बनी हुई टीम है, जिसमें ज्यादातर जो ऑनर हैं इशाल क्रिकेट टीम के वो लाहौर के हैं और लाहौर के प्लेयर्स इसमें शामिल। और आपके बहुत ही आपके बेहतरीन प्लेयर हैं पाकिस्तान के, उमर अकमल इसकी क़यादत कर रहे हैं। बहुत अच्छी बॉल अब्दुल्ला की वहीद ने खेला और इस मरतबा कोई स्कोर नहीं बन सका। इस तरह अली तरीन साहब की भी एक टीम है, उसमें भी यंग लड़के हैं। मोहम्मद वसीम जो पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सिलेक्टर हैं, वो उस टीम की कोचिंग कर रहे हैं, तो वो बहुत अच्छी टीम नजर आई है इस टूर्नामेंट में अब तक। एक और अच्छी बॉल, लेकिन सिंगल डबल बहुत ही इत्मीनान से खेल रहे हैं इशाल के बैट्समैन और बहुत ही कम स्कोर, यानी कि 11 बॉलें और 18 बॉलें और 11 रन चाहिए इशाल क्रिकेट टीम को। एक अच्छा टोटल। जी, क्या लिफाफा देंगे क्या? इस्माइल की बॉलिंग और सिंगल लिया वहीद ने। बड़ी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं वहीद, बड़े इत्मीनान से 23 बॉलों पे 26 रन बना चुके हैं आसिफ। और इस तरह की बैटिंग का मुजाहरा उन्होंने गुज़िश्ता मैचेस में भी किया था, जो कि उन्होंने नाज़माबाद क्रिकेट ग्राउंड पे जो है खेला था। इस वक्त इशाल क्रिकेट टीम का मैच चल रहा है और 138 रन पे 5 खिलाड़ी आउट हैं। इशाल टीम को 10 रन चाहिए 17 बॉलों पे। 10 ओवर में गेम इन्होंने अपनी जानिब कर लिया था। जब खुजुल शाह बैटिंग कर रहे थे, खुजुल शाह जिस तरह से बैटिंग करके गए, तो आखिरी 10 ओवर में 52 रन चाहिए थे इशाल को, तो इतना मुश्किल हदफ नहीं है इनके सामने। अब भी सिर्फ 10 रन की दूरी पर है, 17 गेंदों का खेल बाकी है। एक अच्छी बॉल है इस्माइल की। देखें जिस तरह आप बात कर रहे थे आसिफ के, यहाँ से जो बहुत अच्छा एक्शन रिप्ले, बहुत प्यारी बॉल और जिसे खेलने में नाकाम हुए काशिफ। इनकी तवक्को से जरा नीचे रहा था बॉल, गेंद बल्ले के नीचे से गुजर गई। जिस तरह आसिफ आपने बात की कि यहाँ पे समुद्री हवाएं चलती हैं जिससे बॉलर्स को बड़ा फायदा होता है, वही बात थी।
और एक अच्छा बेहतरीन शॉट खेलने के लिए गए थे, लेकिन मेरे ख्याल में ग्लव्स पे लगा है उनके काशिफ के, और एक रन लिया। बड़ी अच्छी बॉलिंग की स्टाइल है। आहिस्ता आहिस्ता हदफ की जाने बढ़ते हुए 9 रन की दूरी पर है इशाल। शॉट खेलना चाहते थे, पूरी तरह कनेक्ट नहीं कर सके शॉट को, लेकिन आहिस्तगी से एक रन भी उनके लिए काफी है इस वक्त। एक और बेहतरीन शॉट वहीद का, और 4 रन मिलेंगे यहाँ पे। एक इस्माइल को बड़े अच्छी इन्होंने बॉलिंग की, लेकिन उतना ही अच्छा बैटिंग का मुजाहरा किया वहीद ने और 4 रन हासिल किया। आप देख सकते हैं कि बड़ा लंबी हिट मारने की कोशिश की और चौका लगा यहाँ पे। और इस टाइम जो है आप देख सकते हैं एक्शन रिप्ले जो जियो सुपर दिखा रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्शन का मुजाहरा कर रहा है जियो सुपर। जी, जो लेंथ इस्माइल की थी उससे इनके चेहरे पर अंग्रेजी वाली स्माइल आई थी। कमाल का शॉट खेला वहीद ने और 1 रन लिया। यहाँ पे वहीद का स्कोर 32 रन हो गया है 26 बॉलों पे, और टोटल स्कोर इशाल का 144 रन पे 5 आउट, सिर्फ 4 रन चाहिए 13 बॉलों पे। वो जो कहते हैं ना शेर में कि 2-4 हाथ लबे बाम रह गया, तो 2-4 सिर्फ 4 रन रह गए। एक हसीन नजारा मोइन खान अकेडमी पर, बहुत ही बेहतरीन नजारा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। इस्माइल आए, बॉलिंग की और बॉल कर दिया, सीधी बॉल सीधी विकेटों में जाके लगी। काशिफ बोल्ड हुए और सिर्फ 4 रन की दूरी पर जो है ये इशाल के बैटर आउट हो गए। इस वक्त 144 पे 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। गेंद थोड़ा सा अंदर आया था पड़ने के बाद, और अच्छा बॉल, लेकिन खुश नहीं है। स्माइल इनके चेहरे पर नहीं आई। स्माइल चेहरे पे नहीं आई, हालांकि विकेट भी ली, लेकिन काशिफ भट्टी 14 रन बनाने के बाद आउट हुए। 19 बालें इन्होंने खेली, एक अच्छा शाहजेब भट्टी आए हैं नए बैट्समैन। एक्शन रिप्ले देखिए, बड़ी अच्छी बॉल पढ़ के थोड़ी सी इन हुई और सीधी विकेटों में जाके लगी। काशिफ लंबी हिट मारने के लिए उन्होंने बल्ला घुमाया, लेकिन बॉल बिल्कुल बल्ले से दूर थी। काशिफ भट्टी बुनियादी तौर पर स्पिनर हैं, फर्स्ट क्लास में बहुत इन्होंने विकेट्स लिए हुए और सफे अव्वल के स्पिनर माने जाते हैं पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में, और पाकिस्तान टीम के भी बहुत करीब रहे हैं। और काशिफ भट्टी बड़े अच्छे बॉलर, लेकिन उनकी टीम इस वक्त सिर्फ 4 रन की दूरी पे है जीतने के। 12 बॉलों पे 4 रन चाहिए। 144 रन पे 6 खिलाड़ी आउट हैं इशाल टीम के। वहीद 32 रन पे खेल रहे हैं, शाहजेब 0 पर हैं और तारिक हैं नए बॉलर। और फुल टॉस बॉल थी और बड़ा अच्छा फायदा उठाया है वहीद ने, और ये समझ लें कि एक लॉलीपॉप दिया है और उसका भरपूर फायदा उठाया वहीद ने। इशाल ने बआसानी ये टारगेट हासिल कर लिया। आसान गेंद था, फुल टॉस बॉल था, गिफ्ट टू हिम फ्रॉम द बॉलर एंड ही कैपिटलाइज इट। 11 बॉलें कब इशाल की टीम ने हदफ हासिल कर लिया है। इशाल एसोसिएट ने एजी रियल एस्टेट को हरा दिया और 4 विकेटों से हराया है। तो बड़ा अच्छा एक मैच हुआ और इसी तरह मैच की उम्मीद थी, लेकिन अगर मैं ये कहूं कि रियल एस्टेट की टीम के बॉलर्स में एंड में जो है ना वो थोड़ा सा नाकाम रहे। हालांकि शुरू में तो बड़ी अच्छी विकेटें हासिल कर ली थी आसिफ साहब, लेकिन एंड में थोड़ा सा नाकाम हुए। जी, और फील्डिंग में भी कुछ थोड़ा सा मुझे नजर आया कि फील्डिंग में भी ऐसी
कोई चाबुक दस्ती नजर नहीं आई एजी रियल स्टेट की जानिब से। पर मुकाबला बहुत खूब किया इशाल की टीम ने। उनके एक बैट्समैन पाकिस्तान के इंटरनेशनल स्टार हैं खुशदिल शाह, उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और हदफ के करीब ले गए थे अपनी टीम को। आखिरी 10 ओवर में 52 रन दरकार थे और बासानी हदफ हासिल किया इशाल ने। ये देखिए हाइलाइट्स हैं ये, और इन झलकियों पे आप देख सकते हैं कि किस तरह बॉलर्स ने और बैटर्स ने जो है ना अपने खेल का मुजाहरा किया। फील्डर ने कुछ कैचेस पे छोड़े, लेकिन एक मैच तगड़ा हुआ। बड़ी अच्छी लोकेशन पे, बड़ी अच्छे अंदाज में क्रिकेट टूर्नामेंट चल रहा है। और इस टूर्नामेंट की खास बात यह है कि ये हाइलाइट्स जो हैं, खास बात यह है इस टूर्नामेंट की कि ये मोइन खान अकेडमी पे खेला जा रहा है और जियो सुपर इसके प्रोडक्शन कर रहा है और एक बेहतरीन अंदाज में है। आप देख सकते हैं कि तमाम ही अंदाज में, तमाम ही स्टाइल से जो है ना, जिस तरह बैटर खेल रहे हैं उसी तरह कैमरामैन भी उसी अंदाज में बॉल को पिक करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही उम्दगी, बहुत अच्छा मुजाहरा यहाँ पे। खुशदिल शाह ने जो इनिंग्स खेली है, नो डाउट ये आप देख रहे हैं कि किस तरह बैटिंग का मुजाहरा किया था इन्होंने। 50 रन बनाए लेकिन उसके बाद आउट हुए। ये देखिए ये लास्ट बॉल थी और इस